हॅलो हॅलो. लास्ट लाईनच्या मागे जे उभे आहेत लोक त्यांनी प्लीज थोडंसं तुमच्या लेफ्ट हँड साईडला सरका प्लीज. प्लीज मूव्ह टुवर्ड्स युअर लेफ्ट हँड साईड. हॅलो हॅलो हॅलो. हॅलो 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 माइक टेस्टिंग. हॅलो 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 माइक टेस्टिंग. हॅलो 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 माइक टेस्टिंग. बाहेर येतो का? दोन्ही आहे. Yes, good morning, students. I can see a few chairs vacated in between. आपका बैग है तो आप प्लीज गोद में रखिए and let the students who are standing sit. बीच बीच में chairs are empty.
So those who have kept their bags and stuff, just hold it and let the students sit. The guests are already arrived and they will be here in 5 minutes. So kindly ensure discipline. See, this side a few chairs are empty, I guess. Spread out. Lalit, that chair is empty, right? Take the bags off the chairs. Students, please take the bags off the chairs. Here, second row, किसका bag है? पीछे. Keep the bag down and let the students sit. Take the bag off the chair. Bag निकाल दीजिए बेटा. नेहा एक आगे भेज दो. One student send across. आगे. आगे आगे हो. Hello, hello. Students, a gentle reminder again. Students, a gentle reminder again. Make sure your mobile phones are completely switched off or completely on mute form. Your phone should not ring within the session. Do not get up while the program is going on. Make sure you're settled down once the program starts. Students, those who are standing, kindly spread out. Crowded होके मत खड़े रहिए, थोड़ा spread out हो जाइए. Thank you.
A very warm and good morning to one and all present for today's pre-conference workshop on World Youth Skills Days, Transforming Youth Skills for the Future. I request the honorable dignitaries to light the lamp, and I request Radhika Mehendale to enlighten the hall with Saraswati Vandana. शारदे वागीश्वरी जय शारदे वागीश्वरी विद्याधरी वागीश्वरी वागीश्वरी जय शारदे वागीश्वरी जोसने परी कांधी तुझी जोसने परी कांधी तुझी मुखरम्य शारद चंद्र मावळे तुझा हास्यातुनी उजळे तुझा हास्यातुनी तारी युगांची पौर्णिमा तुझ्या कृपेचे चांदणे तुझ्या कृपेचे चांदणे नितवर्षू दे अमुच्या श्री वागीश्वरी जय शारदे वागीश्वरी विधि कन्यके विद्याधरी वागीश्वरी वागीश्वरी जय शारदे वागीश्वरी. Students, please maintain silence. Thank you all. I request the dignitaries to kindly grace the dais. It is said by Robert Greene, the future belongs to those who learn more skills and combine them in creative ways. With this note, I, Dipti Chindarkar, would like to welcome you again and begin with today's workshop. It is the tradition of BPM's KZ Joshi College of Arts and NG Bedekar College of Commerce to host a national or international conference every year. In this academic year, the Skill Development and Entrepreneurship Cell of the college and
Department of Innovation, Incubation and Linkages, University of Mumbai, jointly organizes one-day international conference titled Skill Development and Entrepreneurship, Scaling New Horizons on 21st of January 2023. We are proudly associated with Rambhau Margi Atal Incubation Center, Garze Marathi, and Asian Institute of Family Managed Business. As a prelude to this, today we are conducting pre-conference workshop for students on the occasion of World Youth Skills Day, titling Transforming Youth Skills for the Future. We are very fortunate to have honorable dignitaries today with us to grace the occasion. I request our honorable principal ma'am, Dr. Suchitra Naik ma'am, to welcome our guest speaker, Mr. Shalik Pawar, Deputy Commissioner of Skill Development, Entrepreneurship and Innovation, Maharashtra State. I also request Principal ma'am to welcome our next guest speaker, Mr. Vijay Tarel, consultant and mentor for startups and incubation centers. Thank you, madam. I request our convener of the conference, Dr. Archana Prabhudesai ma'am, to welcome our beloved principal, Dr. Suchitra Naik. I request coordinator of the conference, Dr. Archana Nair, to welcome the convener, Dr. Archana Prabhudesai. I request Assistant Professor Gianna Harchandani to welcome Dr. Archana Nair, coordinator of the conference. Thank you, Gianna ma'am. I also request Gianna ma'am to welcome Mr. Raju Sabre sir, his Employment Exchange Officer. He is there with us today. Thank you, ma'am. I request Gianna ma'am to welcome our vice principals, Professor Subhash Shinde sir, Dr. Priyamvada Tokekar madam, and Dr. Mahesh Patil sir. I also would like to extend a warm welcome to Professor Narayan Barse sir, librarian and coordinator for library science. IQAC coordinator, Dr. Pratnya Razi Bahadur madam, all the heads of the departments and coordinators of different departments. I request our convener, Dr. Archana Prabhudesai ma'am, to say a few words on this today's occasion. Thank you, Dipti ma'am. Good morning and warm welcome to all the respected guests on the dais. On behalf of Skill Development and Entrepreneurship Cell of Joshi Bedekar College, I welcome Honorable Mr. Shalik Pawar sir, Deputy Commissioner, Maharashtra State, Skill Development and Entrepreneurship Department. Honorable Dr. Vijay Talele sir, Consultant and Mentor for Startups and Incubation Center. Our Honorable and beloved Principal Madam, Dr. Suchitra Naik ma'am. Coordinator for International Conference, Dr. Archana Nair madam. Respected Vice Principals, Dr. Tokekar madam, Dr. Mahesh Patil sir, Librarian Barse sir, Dr. Shinde sir, all head of the departments, coordinators and teachers. And welcome to all those dynamic and youthful pillars of future of our nation. Once again, welcome students. It's your day, International Youth Skill Day.
टाळ्यांच्या आवाजावरनं वाटत नाहीये इंटरनॅशनल. येस, that's the spirit, students. So today we all are celebrating International Youth Skill Day. Basically in 2014, first time United Nations General Assembly declared 15th July as World Youth Skill Day. The purpose was basically to celebrate the strategic importance of equipping young people with skills for employment, decent work, and most important, entrepreneurship. And since then, this day has provided an opportunity for a dialogue between young people, technical and vocational educational institutions, training partners, employers, policymakers, and development partners. This year's World Youth Skill Day 2022 mainly takes place amid concerted efforts towards socio-economic recovery from the COVID-19 pandemic. And hence, the theme for today's workshop goes with the same line, that is transforming youth skills for the future. बच्चों, क्योंकि हमने ये हमेशा सुना है, जिसमें कौशल होगा वही कुशल होगा और जिसमें हौसला होगा वही सफल होगा. Today's pre-conference workshop is a prelude to our upcoming one-day international conference, which is scheduled on 21st January 2023. Under the guidance and support of our madam, principal madam, skill development and entrepreneurship cell is consistently trying to provide a platform to these young minds, that is you students, to sharpen your hidden skills, talents, to improve your employability skills, and to nurture the culture of entrepreneurship in our campus. And on this auspicious day, let us pray to the Almighty to take or to make this campus as a hub or place of innovations, startups, and many unicorns. Finally, in the words of our management guru, as a person from Commerce Department, I will take the help of Peter Drucker's words. The only skill that will not become obsolete in the years ahead is the ability to learn new skills. Thank you, students. Thank you, ma'am. I now request our respected principal, Dr. Suchitra Naik, ma'am, to bless us today with her kind words. हॅलो. आदरणीय व्यासपीठ, आजचे आपले प्रमुख वक्ते मिस्टर शालिक पवार, मिस्टर विजय तळेले, मिस्टर राजू साबळे, कॉन्फरन्स आणि एंटरप्रेन्योर सेलच्या कोऑर्डिनेटर अर्चना प्रभुदेसाई मॅडम, अर्चना नायर मॅडम, माझे कलीग वाइस प्रिन्सिपल्स प्रियमदा टोकेकर मॅडम, महेश पाटील सर, इथे उपस्थित असलेले सर्व टीचर्स and my dear students. Okay, a very warm good morning to all of you. Good morning. So thank you very much for this type of overwhelming response. Okay, in the first place, I really appreciate. I can see a few faces like Simran's, which I was missing for this last 2 years. And I can see some of you are sitting with paper and pen. I'm really happy. Yes, I know some of you are sitting to report the event, but some of you are sitting here to learn from our learned speakers. Archana madam, thank you very much, because you have given fair background of what we are going to do and what our conference is, how many seminars. Let me tell you, in our entire campus, nearly 5 to 7 seminars are taking place every year, and students get opportunity to listen to stalwarts from different fields.
completely free of charge. Okay, and what we want is that you all should take up this opportunity and do something. Okay, now madam ने जसं सांगितलं की youth to be skilled, कौशल होना आज के जमाने में बहुत ही इम्पॉर्टंट है. थोडंसं मराठी थोडंसं इंग्लिश बोलते. जुन्या मराठीमध्ये एक अशी म्हण होती, कामावे तो सामावे. ओके, इफ यू हॅव एनी skill, then you easily get absorbed anywhere. Okay, see, भारताचा इतिहास बघता तुमच्या असं लक्षात येईल, आता आपण आझादी का अमृत महोत्सवामध्ये आहोत, अजून खूप साऱ्या गोष्टी पुढे येणार आहेत, पण तेव्हा विशेषत्वाने मला असं म्हणावंसं वाटतं की आपला अतिशय उज्ज्वल इतिहास आहे ॲज फार ॲज स्किल्स आणि कौशल्य आर कन्सर्न. ओके, जगातलं 7वं आश्चर्य आपल्याकडे आहे, जो ताजमहाल आहे, तो अत्यंत कुशल कारागिरांनी बांधलेला आहे. अशी एक असं एक छोटंसं इतिहासातलं उदाहरण आहे की पहिली जी राणी होती इंग्लंडची, तिच्यासाठी एका छोट्याशा कारागिरांनी एक छोटीशी डबी भेट दिली तिला, आणि ती डबी बघून तिला वाटलं ही काय छोटीशी डबी आहे. तिने जेव्हा ती डबी उघडली तेव्हा हात घालून ती जेव्हा हे काढायला लागली तर तिच्या असं लक्षात आलं कित्येक मीटर हाताने विणलेलं सिल्क त्याच्यामध्ये होतं. ओके, सो ती डबी आंब्याच्या कोळीपासून बनवलेली होती आणि आतलं जे सिल्क होतं ते कारागिरांनी हाताने बनवलेलं होतं. का, कसं, कधी ही स्किल्स काळाच्या पडद्याआड गडप झाली, काळ बदलला, पुलाखालनं खूप पाणी वाहून गेलं. आता मॅडमनी मेन्शन केला तसं करोनावरही मात करून आज आपण सगळे इथे आहोत. तुम्ही इतक्या उत्फुल्ल चेहऱ्याने उत्साहाने इथे बसलेले आहात. सी, दिस इज ऑल, शिक्षण हे तुमच्यासाठी आहे. सो हे सगळं बघून आजच्या जमान्यामध्ये जी कौशल्य आपल्याला पुढे नेतील ती कौशल्य शिकणं हे तुमचं कर्तव्य आहे, आणि ती कौशल्य शिकण्यासाठी तुम्हाला मदत करणं हे आमचं कर्तव्य आहे. ही एकच प्रोफेशन अशी आहे मला असं वाटतं, टीचिंग प्रोफेशन, जिथे आमचं इव्हॅल्युएशन हे तुमच्या इव्हॅल्युएशनशी जोडलेलं आहे. मला असं वाटतं ही एकच अशी प्रोफेशन असेल की ठाणा कॉलेजचे टीचर्स कसे आहेत हे कशावरनं कळणार तर आमचे विद्यार्थी कसे आहेत. आणि सर, मला तुम्ही बघताच आहात की ती ओव्हरवेल्मिंग रिस्पॉन्स आहे आणि मुलं ह्या दिशेने प्रयत्न करतायत. ऑलरेडी 3 मुलं पुढे आलेली आहेत. पण माझं तुम्हा सगळ्यांना अतिशय मनपूर्वक कळकळीचं आव्हान आहे की तुमच्या डोक्यामध्ये काही कल्पना असेल तर तुम्ही पुढे या. एका ठराविक अमाऊंट पर्यंतचा सीड मनी कॉलेज तुम्हाला देईल, सीड कॅपिटल तुम्हाला देईल, बट यू हॅव टू कम फॉरवर्ड विथ एन आयडिया. ओके, सो फॉर दॅट you have to dream big, and don't dream big during sleep. Okay, you have to dream big when you are awake, and you have to spend sleepless nights and days to actualize that dream. Okay, so I'll just conclude with these dreams, because dreams alone change this world. Okay, mark this, dreams alone change this world. Those who dare to dream, bhavishya unka hai. Okay, so you have to dare to dream and actualize those dreams in reality. Today in world we are youngest nation, we are youngistan, and we will make it even better, even strengthened, and good India that is in your hands. Okay, so I'll just conclude with a small line. ख्वाबों को सच बनाना, दिल ने यही है ठाना. Thank you very much. Thank you, ma'am. As rightly said by ma'am, we have to keep dreaming, but not at night, but during day. We have to have the sleepless nights and work hard during day. Thank you always. Thank you, ma'am, for always motivating all the students and all of us with the constant support. With the blessings and guidance of Dr. Vijay Bedekar, sir, Chairman of Vidya Prasarak Mandal, we would like to take this workshop further. I now request Assistant Professor Jia
Gianna Harchanda need to take over the dais for further proceedings. Morning. Thank you, Dipti ma'am. First of all, a very hearty good morning to all the dignitaries on the dais, off the dais, to all my teacher colleagues and my dear students. On this fortunate day, it really delights me to introduce one of the esteemed personalities that we have with us today, Mr. Shalik Pawar. Throwing light on Sir's academics, Sir is bachelor's in education, bachelor's in arts, and diploma in vocational guidance. Sir has a wide experience of 9 years in the field of academics. In the year 1998, Sir has successfully cleared one of the toughest examinations of MPSC, that is Maharashtra Public Service Commission. Talking more about Sir's journey, Sir started in the capacity of employment officer. Sir has served his valued services over the period of 23 years and is now has reached with his hard work at the dignified position of Deputy Commissioner of Skill Development, Entrepreneurship, Innovation Department, Maharashtra State. Sir has done some path-breaking and notable practices in the development of youth of Maharashtra. And this introduction is just a glimpse of it. Sir today would be enlightening all of us with the schemes available in the Maharashtra for youth development. So without wasting more of a minute, let us all have the privilege of listening to Mr. Shalik Pawar, sir. Sir, over to you. दोन मिनिटं फक्त मॅडम, नंतर आपण खाली बसलात तरी चालेल. ऑनरेबल स्टेज आणि इथं उपस्थित असलेले सर्व माझे विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी, आज आपण एका खास कार्यक्रमासाठी या ठिकाणी जमलेलो आहोत. मॅडमने माझा परिचय करून दिला. ऑल यू नो मराठी नो, फिर हिंदी में बात करें क्योंकि मैं अंग्रेजी में अच्छी तरह से बता नहीं पाऊंगा. या तो मराठी या अंग्रेजी, हिंदी जो भी चलेगा. आई थिंक हिंदी मराठी दोनों लैंग्वेज आप लोगों को समझ में आ जाएगी. तो मैं हिंदी में स्टार्ट करता हूं. सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैं सोचा था ये बरसात है, मौसम खराब है, कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों की भीड़ देखकर और खास तौर पर जो डायस पे बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों की मेहनत, ये सब देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है. दोस्तों, तमन्नाओं की जिंदगी तो हर कोई बसाता है. दोस्तों, तमन्नाओं की जिंदगी तो हर कोई बसाता है, मगर पाता वही जो इस कॉलेज में पढ़ता है. शुक्रिया दोस्त. अब मैं ये डायस छोड़ता हूं क्योंकि मैं डायस के सभी पदाधिकारियों को भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चाहे तो नीचे जा सकते, क्योंकि मैं अभी वो माइक लेके मेरा जो स्पीच है वो देने वाला हूं. तो एक जगह पे खड़े रह के वो टीचर नहीं दे सकता है पूरा स्पीच, क्योंकि मेरे अंदर एक टीचर है जो 9 साल तक मेरे अंदर था, वो अभी भी है. इसलिए मुझे वो ब्लैक बोर्ड के आगे पीछे घूमने की आदत है, इसलिए मैं ये माइक हाथ पे ले रहा हूँ.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब जहां भी जाते हैं वहां पर वो स्किल इंडिया, कुशल भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया ऐसी बातें करते रहते। क्यों, क्या कारण है? तो उसके पीछे मकसद है, ये तो प्रोग्राम अपना कौशल विकास का 2008 से ही चालू हो गया था। उस समय एनएडीसी की स्थापना की गई थी। एनएडीसी मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 2006 में जिनेवा में 172 देशों के रोजगार मंत्री उनकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जब 3 दिन का उनका कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में ऐसे समझ में आया, जब डिस्कशन आया कि इन फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड को स्किल मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। और उस समय ऐसा हुआ था, जब पूरा निष्कर्ष निकाला गया तो आने वाले 2022 मतलब अभी आज के साल में 2022 चल रहा है, 2022 में इंडिया की जो यूथ है उसकी उम्र जो रहेगी वो 29 रहेगी। तो आज की आपके इंडिया की जो यूथ है वो 29 है, मतलब सबसे ताकतवर मैन पावर है अपने पास। लेकिन उसके पास क्या नहीं है, स्किल नहीं है। यंग जनरेशन है और अदर जो वर्ल्ड है वो अबव 45 रहेगा। मतलब आज के जमाने में, आज के अगर ईयर पकड़े हम 2022 का, तो 2022 में इंडिया का सरासरी जिसे हम बोलते हैं उसकी एज जो है वो 29 है। और जो इंडिया छोड़ के अदर कंट्रीज है मान लो, तो उनकी उम्र 40-45 के ऊपर है। मतलब वहां पे काम करने वालों की क्षमता कम है। हमारे यहाँ इंडिया में काम करने वाले की क्षमता की पॉपुलेशन ज्यादा है। इसलिए पूरे वर्ल्ड को इंडिया इन फ्यूचर में मैन पावर सप्लाई करेगी। आज भी हमारे यहाँ डिमांड आती है कि सऊदी अरेबिया में 500 नर्सेज चाहिए, नहीं है हमारे पास, 2000 ड्राइवर चाहिए अच्छे, नहीं है अपने पास देने। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड अपना इंडिया की तरफ ये देख रहा है कि इंडिया से हमें कुशल मैन पावर मिलेगी। इसलिए 2015 से हमने स्किल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जिसमें पहले स्कीम चलाई गई थी उसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट स्कीम 1.0। उसके बाद में फिर उसे देखकर हम महाराष्ट्र में भी हमने एक कार्यक्रम शुरू किया। जैसे कि सेंट्रल में एनएचडीसी शुरू हुआ है, उसी तरह से अपने स्टेट में एमएसएसडीएस, महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी, उसकी स्थापना की गई। वो भी रजिस्टर्ड संस्था है। तो उस संस्था की तरफ से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन किए जाते हैं। सबसे पहले अपने महाराष्ट्र में जैसे केंद्र में की योजना थी प्रधानमंत्री कौशल विकास, अपनी आज जो स्कीम चलाई गई कि चल रही है उसका नाम है प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियान। अभी ये स्किल डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ाते हैं आप लोगों को? आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप ग्रेजुएशन में, तो डिग्री इंजीनियरिंग हूँ, मुझे सब आता है, लेकिन आपको बस स्किल नहीं, सदा ड्राइविंग नहीं। आपको बड़ा आश्चर्य लगता है, बीएससी हुआ लड़का होता है, घर में लाइट चली गई है, वो इलेक्ट्रिशियन को फोन करता है, उसको सादा फ्यूज निकाल के उसमें वायर डाल के, केबल छोटी सी ये डाल के फ्यूज लगा दिया तो लाइट आ जाएगी। इसका नॉलेज नहीं, इसका स्किल नहीं है। ये छोटे छोटे स्किल हम लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप लोगों को पढ़ाते हैं। जैसे आपको 200 आवर्स से लेकर 1000 आवर्स के डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेस है। नियर अबाउट 64 सेक्टर्स है। सेक्टर क्या होते हैं? जैसे कि लॉजिस्टिक एक सेक्टर हुआ। अब लॉजिस्टिक बोले तो उसमें कम से कम 40-50 प्रकार के जॉब रोल होते हैं। हेल्पर है, ड्राइवर है, कंटेनर वो उठाने वाला है, वो बाद में क्रेन चलाने वाला है। डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेस है। एग्रीकल्चर, एक एग्रीकल्चर सेक्टर ले लिया, उसको डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेस है, उसमें कम से कम सैकड़ों 100-150 कोर्सेस है, जॉब रोल बोलते हैं। तो किसी भी सेक्टर में कौन सा भी जॉब रोल में आप ट्रेनिंग ले सकते। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? मैं तो हर बार आपको देने के लिए नहीं आऊंगा। तो इसके लिए नेक्स्ट वाला साइड
हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है mahaswayam.gov.in। ये आप लोग जरूर इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए और अपना खुद का पंजीकरण कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। ये एम्प्लॉयमेंट की साइट है, इसमें आपको 3 बातें मिलेंगी, 3 नहीं 4 भी मिलेगी, जैसे कि इनोवेटिव, जो कि सर बाद में आपको बताने वाले हैं, थोड़ा बहुत उस पर चर्चा करूंगा। तो कहने का मेरा मतलब है, सबसे पहले तो आप आज ही, आपके यहाँ पे आईटी की लैब होगी, कंप्यूटर, या आपके हर एक के पास मेरे ख्याल से मोबाइल है, दुनिया मुट्ठी में है। मोबाइल का अच्छा यूज किया तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में, उसका मिस यूज किया तो आप खत्म हो जाओ। 90% बच्चे आजकल मिस यूज कर रहे हैं उसका सही सलामत इस्तेमाल करो तो आप बहुत आगे जाओगे, पूरा नॉलेज दुनिया का उस पर है। तो आपने मोबाइल में भी हमारी वेबसाइट खुल सकती है, उस पर आप भेज दीजिए। तो सबसे पहले आपको बाय डिफॉल्ट ये पेज आएगा, जैसे ही ओपन होगी, जॉब सीकर लॉगिन। आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डाल देना, लॉगिन करना। आपका एक पहला फर्स्ट पेज निकलेगा, नेक्स्ट पेज दीजिए प्लीज। क्या इंफॉर्मेशन भरनी है यहाँ पर? कुछ नहीं है, खाली 2-3 स्टेप है। अपना नाम भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ भरना है और वो कैप्चा डालना है और सबमिट कर देना। फिर उसके बाद में आपको आएगा नेक्स्ट पेज, जहां पर आपको आपका पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा नाम डालना है, एड्रेस डालना है। मतलब ये हो गया अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। मतलब एक अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको विदिन 5 मिनट आपको लगते हैं। आप कैसे भी उसका रिसीट निकाल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट कार्ड हो गया आपके पास। ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड आपके मोबाइल पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, आपके ईमेल पे यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा। तो इसका आपको आगे चल के इतना बेनिफिट है, जैसे कि हम लोग थे स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट में यही पोर्टल पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप टैब है, वो देखिए स्किल डेवलपमेंट करके टैब है, 1 2 3 तीसरा वाला। तो उस पे अगर आप जाओगे तो आपको ऑल ओवर महाराष्ट्र कितने टीसी, कितने टीपी, कितने यहाँ पर कौन कौन से जॉब रोल, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन कब उसका आप बेनिफिट कब ले सकते हो? शासन आपल्या दारी आम्ही म्हणतो, नेहमी बोलत असतो, आम्ही आता आज तुमच्या दारी आलेलो आहोत, ही सगळी इन्फॉर्मेशन आम्ही तुम्हाला दिलेली आहे, आता देतो आहोत, तर याचा यूज करा। नुसतं आज ऐकून मग काय ते पवार साहेब आले होते, काहीतरी सांगून गेले, काय खरं नाही त्यांचं, बोलत होते त्यांचं काहीतरी, असं करू नका मित्रांनो। प्लीज डू नॉट डू दिस टाइप ऑफ वर्क. प्लीज यूज दिस पोर्टल अँड रजिस्ट्रेशन युअर सेल्फ. तुमचं रजिस्ट्रेशन तुम्ही करायचं आहे. रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर काय बेनिफिट आहे, तर मग कौशल्य विकासाचा अगोदर तुम्हाला ते दिसेल. त्याच्यानंतर पहिल्या स्लाइडवर आपण दाखवतो कौशल्य विकासानंतर. मग आता कौशल्य विकासामध्ये त्याला स्किल डेव्हलपमेंट मध्ये अगदी तुम्हाला आपण इंटरप्रिन्योरशिप करीत त्यावेळी ते येईलच, पण बोलावं कसं, म्हणजे स्पीकिंगचे कोर्सेस सुद्धा त्याच्यावर आहेत. म्हणजे डिफरंट टाइप ऑफ सेक्टर्स अँड डिफरंट टाइप ऑफ जॉब रोल्स, आणि कोणते जॉब रोल तुमच्या ठाण्याच्या जवळपास चालू आहे, ठाण्यामध्ये किती संस्था आहेत. पण तुम्हाला असं वाटत असेल की मला असा एखादा जॉब रोल करायचा, एव्हिएशन मध्ये करायचं, एअर होस्टेस होण्यासाठी काय लागते, एअर होस्टेसने कसं बोलावं, किंवा एव्हिएशन मधले निसर्ग एअर होस्टेसच आहे असं काही नाही, तिथेही डिफरंट टाइप ऑफ अगदी लोडर पासून त्याच्यापासून वेगवेगळे जॉब रोल आहेत. तर त्याचं ट्रेनिंग कुठं मिळेल ते सुद्धा तुम्हाला, समजा ठाण्यामध्ये नसेल तर तुम्ही मुंबईमध्ये सर्च करू शकता. पहिले डिस्ट्रिक्ट निवडायचा, डिस्ट्रिक्टचे दिसतील तुम्हाला. पण जेव्हा तुम्ही पहिले आमचं एम्प्लॉयमेंट कार्ड काढून घ्या, जो माझा दुसरा पार्ट होता, तिथं पहिल्या पेजवरचा रोजगार, म्हणजे आज तुम्ही काम काय करायचं आफ्टर एंड ऑफ दिस सेशन, पहिला आजच्या आज एक काम करायचं, तुमच्या मोबाईलवरून काढा, तुमच्या कॉलेजमध्ये कॉम्प्युटर असतात, इथं बसले कुठेही आमची वेबसाईट उघडते, 12 महिने आणि 24 तास वेबसाईट चालू असते. त्याच्यामुळे तुम्ही कधीही ते एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करा. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पेज, सॉरी, हा ठीक आहे. मग या वेब पोर्टलवर आता मी सांगितलं तुम्हाला की स्किल डेव्हलपमेंट नंतर दुसरं काय असतं की आम्ही जॉब फेअर लावत असतो, जे रोजगार मेळावे. रोजगार मेळावे ही एक संकल्पना काय आहे, मतलब ये क्या टर्म क्या है, जिस इंडस्ट्री के पास वैकेंसी है उस इंडस्ट्री को हम लोग बुलाते हैं. इंडस्ट्री हमें बताती है, ऑनलाइन ही बताती है, क्योंकि इंडस्ट्री वाले को भी हम लोगों ने यूजर आईडी पासवर्ड दे दी. आप लोगों को भी आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है,
मतलब बीच में हम लोग जो पहले काम करते थे वो खत्म हो गया कि आपका नाम हम लोग यहाँ पर भेज रहे हैं, फिर आपको वहाँ पर नौकरी लगेगी, फिर जो कोई मिस मैनिपुलेशन होता था वो सब खत्म हो गया। एक तरफ कैंडिडेट है, एक तरफ एम्प्लॉयर है। मैं अगर एम्प्लॉयर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे 10 बच्चे सिविल इंजीनियर के चाहिए, मैंने पोस्ट डाल दी जॉब फेयर में। आप लोगों के पास यूजर आईडी पासवर्ड है, आप लोग जब भी देखोगे तो आपको वैकेंसी दिखाई देगी यहाँ पे कि ये वैकेंसी है, इस जगह पे इतने हैं, तो वहां पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। वहां पर अप्लाई नाम का टैब आता है लास्ट में, जैसे कि नेक्स्ट जाओगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट, तो अप्लाई को अगर आप क्लिक कर दोगे, पहले तो आपको जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करना है, तो आई एग्री कर देना है, ये आएगा। आप लोग जैसे पोर्टल आप सब पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, तो आपको कोई इतना पोर्टल बहुत यूजर फ्रेंडली है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो इस जॉब फेयर में आपको पार्टिसिपेशन करना है, पार्टिसिपेशन करना है। आपका बायोडाटा ऑटोमेटिक उस एम्प्लॉयर के पास चले जाता है, क्योंकि आपने पूरी इंफॉर्मेशन भरी हुई है। तो आपका बायोडाटा उस एम्प्लॉयर के पास चले जाता है जिस एम्प्लॉयर की वैकेंसी को आपने अप्लाई किया, और आपको वही वैकेंसी दिखेगी। अगर आप बीकॉम वाले हो तो आपको सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। तो जिस एजुकेशन को आपका वैकेंसी मैच होती है, वही वैकेंसी आपको जॉब रोल में जॉब फेयर में दिखाई देती है। और ये ऑनलाइन हर एक्सचेंज को हर महीने एक लेना ही है, डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस को, तो स्किल डेवलपमेंट ऑफिस, और ऑफलाइन जैसे गैदरिंग करके साल में 4 हर एक एक्सचेंज को लेने ही है। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में 4 ऑफलाइन और 12 ऑनलाइन, इतने सारे जॉब रोल 36 डिस्ट्रिक्ट से, कितने सारे जॉब रोल आप लोग को मिलते हैं। आप लोग किसी भी जॉब रोल को बैठ सकते हैं। अगर आपको मेरा दूसरा पार्ट फर्स्ट पेज पे आ जाइए सर प्लीज जरा एक बार, क्योंकि हाँ, जो अभी स्किल डेवलपमेंट हो गया था उसके बाद में रोजगार और जॉब फेयर से आपको रोजगार मिल रहा है, ये हमारा काम है। अभी ये जॉब फेयर में ही रोजगार है क्या? ऐसा नहीं है। एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बेरोजगार है, कहीं भी रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है, और मैं बोलता हूँ कि लाखों में रोजगार है, लाखों की तादाद में रोजगार है, लेकिन उसके लिए कैपेबल मैन पावर है। और दूसरा ये है कि हम डिग्री भी ले लेते हैं, आईटी की डिग्री ले लो, इंजीनियरिंग की किसी भी सेक्टर की किसी भी साइड की डिग्री ले लो, लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास मोबिलिटी नहीं है। ये बड़ा ड्रॉबैक है हमारा महाराष्ट्रियन लोगों का। अदर स्टेट के लोग हमारे यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं, और हम लोग आंध्र में जाके तमिलनाडु में जाके या साउथ में जाके हम लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, वहां पर वैकेंसी बहुत सारी है। मोबिलिटी होना चाहिए, जॉब अगर करनी है कोई दुनिया में कहीं भी जाना चाहिए, ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड को हम लोगों को मैन पावर दे रही है, ये अपेक्षा से लेकर हमने स्किल डेवलपमेंट, तो हमें कहीं भी जाके जॉब करनी है, जॉब अगर चाहिए तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी बहुत ही जरूरी है। अगर मोबिलिटी आपके पास नहीं है, मेरे को तो घर के पास ही नौकरी चाहिए, और वो भी गवर्नमेंट की चाहिए, फैन के नीचे मैं बैठूंगा, कुछ तो भी खरीदते दूंगा, अभी वो जमाना गया। अभी गवर्नमेंट में जो क्लास 3 या क्लास 4 की जॉब है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भरने लग जाएंगे, या शुरू भी हो गया कुछ डिपार्टमेंट, मतलब आउटसोर्सिंग कर रहे हैं फुल पेमेंट पे। अभी कहीं भी गवर्नमेंट में जॉब मिलने की क्लास 3 क्लास 4 की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। हाँ, तो दूसरा सोर्स आप लोगों को अगर गवर्नमेंट में ही आना है, तो जैसे कि मेरा जब इंट्रोडक्शन किया गया तो एमपीएससी का जिक्र हुआ। तो एमपीएससी मतलब महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, और यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज होती है, और जो कि वैकेंट भी है आज, और महिलाओं की तो बहुत सारी मात्रा में वैकेंसीज वैकेंट है। एमपीएससी का स्टडी कीजिए, आफ्टर ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट चलता है, उसको इंजीनियरिंग साइड का हो, आर्ट साइड का हो, ग्रेजुएशन हो, कोई भी। अभी ओपन यूनिवर्सिटी से भी अगर अपने ग्रेजुएशन किया हो, तो वो बंदा भी आपको इस एमपीएससी की एग्जाम को बैठेगा, और वो मेरे जैसा क्लास 2 क्लास 1 ऑफिसर एंट्री में होगा।
क्लास 2 से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक की पोस्ट सारी एमपीएससी से भरी जाती है। उसके बाद में वही एक फील्ड है, ऐसा नहीं, दूसरा फील्ड है रोजगार के लिए, वो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर सब आईएएस, आईपीएस, आईपीएस ये कैडर के लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। उसको भी एनी ग्रेजुएशन बंदा बैठ सकता है। और अभी यूपीएससी की एग्जाम मराठी में भी होने लग गई है। पहले हिंदी और अंग्रेजी में रहती थी, अब मराठी भी इस्तेमाल होने लग गया है। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट है यूपीएससी पास होना। डायरेक्ट आईएएस कलेक्टर बन के आ जाइए, आईएफएस बनिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के, या आईपीएस बनिए इंडियन पुलिस सर्विस। मतलब ऐसे सिर्फ ये 3 नाम लिए मैंने यूपीएससी के। यूपीएससी में 27 टाइप पोस्ट होते हैं अलग अलग। जो फॉरेन में राजदूत होते हैं अपने, वो पोस्ट होती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, उनकी भी पोस्ट यूपीएससी से भरी जाती है। तो यूपीएससी ये एक हो गया। दूसरा बीकॉम वाले बच्चों के लिए खास करके बैंक रिक्रूटमेंट बोर्ड है। वो बैंक रिक्रूटमेंट जो भी नेशनलाइज बैंक में ऑफिसर्स होते हैं, वो सब बैंक रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से भरे जाते हैं। प्राइवेट बैंक वाले किसी से भी ले लेते हैं, लेकिन जो नेशनलाइज बैंक होती है वो बैंक रिक्रूटमेंट बोर्ड से ही रिक्रूट करते हैं। वो कॉमर्स साइड के बच्चे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, यहाँ पर आईटीआई से लेकर एनी टेक्निकल ट्रेड वाला बच्चा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से भरा जाता है। मतलब इतने सारे बोर्ड्स है अलग अपने अपने टाइप के, कि जहाँ पर वैकेंसी आज भी वैकेंट है, उसको प्रॉपर बंदा नहीं मिल रहा है। तो मैंने एक तरफ बोला कि जॉब नहीं है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, और एक तरफ इतने सारे सोर्स है कि जहाँ पर आपको रोजगार मिलेगा। अगर आपने मगर वहां पर जो है रोजगार प्राप्त करने के लिए कंपटीशन में हमें स्टडी करना है, स्टडी करके उस कंपटीशन को हर जीत के आगे बढ़ना है, तो आप लोग भी मेरे जैसे ऑफिसर बन सकते हैं, आप लोगों को जॉब मिल सकती है। अगर मान लो आपने बहुत सारे प्रयत्न किए, इतनी मेहनत की, वो स्टडी किया, मान लो एमपीएससी के 4 अटेम्प्ट होते हैं, यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट होते हैं, 2 दिए फेल हो गए, बैंक रिक्रूटमेंट में फेल हो गए, फिर यहाँ जॉब दे रहे उसमें भी फेल हो गए, आसपास के कोई कंपनी में जा रहे हो उसने भी आपको रिजेक्ट कर दिया, जॉब नहीं मिली, तो क्या करोगे? क्या करोगे? अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये सब आप जो पढ़ रहे किस लिए पढ़ रहे? पढ़ जो रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? आगे जाके ऐशो आराम करने के लिए, सोने के लिए? कुछ ना कुछ तो करना है कि नहीं आगे। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक को करना ही है, वो जिंदगी में टलने वाला नहीं। तो आपको जॉब करनी है। अगर जॉब आपने हर तरह की कोशिश कर ली, कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लेकिन मान लो आपने इतनी सारी कोशिश कर ली, बहुत सारी एटी का क्या बोलते, छोटी एटी का जोर लगा दिया, फिर भी आप लोगों को नौकरी जॉब नहीं मिली, तो क्या करोगे? क्या करोगे? तो अभी मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ। अगर मान लो आपने इतने सारे प्रयत्न करके, इतनी सारी मेहनत करके आप लोगों को कहीं भी जॉब नहीं, तो आपके पास में जो मेरा दूसरा पॉइंट है या मेरे ऑफिस का नाम है उद्योजकता, जिसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, आपके हर एक के अंदर एक एंटरप्रेन्योर छिपा हुआ है, एक उद्योजक छिपा हुआ है अंदर। वो एक तरफ दबा हुआ है, हम लोगों ने उसको दबा के रखा है, क्योंकि हमारा कल्चर हमको दबा के रखता है। आप लोगों ने बचपन से लेकर आज तक अपने बुजुर्गों के जब भी पैर छुए, अपनी माता के छुए होंगे, पिता के होंगे, या कोई मेहमान आते उनके पैर छूते हैं, तो आपको क्या आशीष देते हैं? खूब बड़ा आदमी बन, एक तो खूब मोटा हो, चांगली नौकरी कर। पर कभी ऐसा आपने सुना क्या कि बड़ा होके टाटा बन, बड़ा होके बिरला बन, बड़ा होके अंबानी बन, बड़ा होके अदानी बन, मतलब बड़ा होके उद्योजक बन, एंटरप्रेन्योर बन? ऐसा किसी ने आशीष दिया आपके माँ बाप ने या आपके परिवार में किसी
रिलेटिव ने दिया है क्या? नहीं दी। इसीलिए वो हमारा इंटरप्रेन्योर बचपन से ही दब गया है। हर एक के अंदर एक उद्योजक बैठा हुआ है, उसको सिर्फ बाहर निकालना है। और वो लोग अगर आज आप लोगों में से, आज मान लो आप 300 लोग हैं यहाँ पर, 300 में से 30 लोगों ने भी अगर डिसाइड कर लिया कि मैं उद्योजक बनना चाहता हूँ, एक बार अपने मन में आ गया कि कुछ भी हो जाए मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, फिर आगे जो है वो अपने आप आपको रास्ता मिलते जाता है, कारवां आपके पीछे चलता है। एक साइड दीजिए जरा, क्योंकि मैं उद्योजकता में मैं बताता हूँ वहां तक। जाइए जाइए जाइए, हाँ बस रुक जाइए। यहाँ पर अगर आपने सोचा कि भाई चलो मुझे नौकरी तो नहीं मिली है, तो मैं एक छोटा मोटा कुछ ना कुछ व्यवसाय कर लूंगा। तो एक बात बता दूं, जब धीरू भाई अंबानी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कितने पैसों से किया होगा? कोई बता सकता है कितने पैसों से स्टार्ट किया अपना बिजनेस? कोई भी बोले कितना, 50 लाख, लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितना कोई भी बता सकता है? कोई कितना अमाउंट होगा उनके पास उससे? यस, ओनली 500। और आज वो रिलायंस ग्रुप कहां तक पहुंचा हुआ है, सोचिए। तो आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, मींस मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। सिर्फ आपकी सोच अगर आज हो जाती है, ये कन्वर्ट होती है मेरे कहने से, तो मैं तो हमेशा आपका बिजनेस जब तक खड़ा नहीं होता, पूरा नहीं होता, तब तक मैं आपके पीछे खड़ा हूं। कोई भी बंदा आज सोच ले कि सर मुझे ये करना है, तो मैं पूरा आपका सेटअप बनते हुए लास्ट तक, हमारा डिपार्टमेंट, मैं, हम सब, मतलब गवर्नमेंट ही आपके साथ में। मगर आप लोगों को अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो सबसे पहले ये जो है, ये 5 चीजें आपके पास चाहिए। क्या चाहिए? उद्योगाची आवड, मतलब बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं। आप लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वासी मार्केट है, वासी मार्केट में 2000 व्यापारी है, मतलब 2000 उद्योजक है, और उसका टर्नओवर है 200 करोड़ का, लेकिन उसमें से 80-20 ही व्यापार चलता है। 80-20 जानते हो आप? 80% जो लोग होते हैं ना, उसको बिजनेस तो वो करता है, लेकिन उसको उसमें क्या है, इंटरेस्ट नहीं है। वो आ गया मेरे पीछे लग गया, नहीं कुछ था, नौकरी नहीं मिली इसलिए कर रहा हूँ। ऐसे अगर सोच दिल में आती है तो वो 80 में चलेगा। मतलब 100 करोड़ का अगर बिजनेस इस एरिया में हो रहा है, तो वहां पर सिर्फ 20% ऐसे जो बिजनेसमैन होते हैं जो 80% का बिजनेस करते हैं, और 80% बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो 20% का बिजनेस करते हैं। मतलब 1 करोड़ में से 20% लोग ऐसे होते हैं कि जो 80 करोड़ में काम कर रहे हैं। 100 करोड़ में से 80 करोड़ में वो कमा रहा है 20% लोग, और 20 करोड़ में 80% लोग उसमें अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? उसका मकसद ये होता है कि उसको उसमें इंटरेस्ट है, वो चला गया, वो बिजनेस में चला गया, नाइलाज था उसका, कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसने पान का दुकान डाल दिया, इसका ठेला डाल दिया, उसका ये कर दिया। फिर वो, कभी भी बिजनेस में इंसान ने हंसते हुए रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना हुआ चाहिए। जिसका चेहरा ही अगर ऐसा हो तो उसके पास क्या ग्राहक आएगा? आएगा ही नहीं ना। उसका चेहरा ही ऐसा है, उसका चेहरा देख के वो दुकान से बाहर निकलता है। इसलिए बिजनेस में अगर आप हंसते रहो, खिलते रहो, और प्रेम से अगर बिजनेस करो, इंटरेस्ट से, तो आपका पूरा नीचे का स्टाफ भी आपके साथ हंसता रहेगा और बिजनेस बढ़ेगा। सेकंड थिंग, आपके पास पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। सबसे पहले तो निगेटिव और पॉजिटिव माइंड क्या होता है, मैं अगर आप में से हर एक को एक रूम में बुला के एक एक को पूछूं, ये बॉटल है यहाँ तक भरा हुआ है मान लो, तो अगर आप लोगों को पूछते समय अगर किसी ने बताया सर आधा भरा है
और किसी ने कहा कि आधा एम्प्टी है। जिन लोगों को ये बॉटल आधा एम्प्टी दिखाई देता है वो जिंदगी में कभी पॉजिटिव नहीं रहते हैं, वो निगेटिव रहते हैं, और उन बंदों ने कभी भी बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। वो बिजनेस नहीं चला पाएंगे, वो अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, अच्छा उद्योजक नहीं बन सकता। इसलिए निगेटिव माइंड वाला बच्चा, अगर कोई भी उद्योजक, फिर मैं बोला ना वो 20% में फाइट करते हैं, उसमें भी वो फाइट पे टिक नहीं पाएगा अगर निगेटिव। इसलिए अपना थिंकिंग जो है, अभी पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, आप लोगों को पहली बार मेरे तरफ जब आता है बच्चा, सर गवर्नमेंट की सब्सिडी है, सब्सिडी कितनी मिलेगी, इसका वो सवाल रहता है। उस बंदे को मैं बोलता भैया तू उतर ही मत और आई मत। तो बिजनेस इसलिए करना चाहता है क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, इसलिए तो बिजनेस में आना चाहता है। बिजनेस नहीं करना चाहता है, सब्सिडी के ऊपर तेरी नजर है, तो तू बिजनेस नहीं कर पाए। तो ऐसे दिमाग से निकाल देना है। और पॉजिटिव, मेरे पास कुछ नहीं मतलब क्या है, सब कुछ है अपने पास। सब कुछ क्या है, सबसे पहले तो सोचने की ताकत दी है भगवान ने। सबसे पहले दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों कान, एक नाक, जो भी है बॉडी के सभी पार्ट्स आपने पूरे परफेक्ट दिए हुए। तो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सारा कुछ दिया है भगवान ने हमें, और क्या चाहिए। और इसी के ऊपर, यही अपनी पॉजिटिव थिंकिंग है, इसी के ऊपर अगर आप सोचोगे तो जिंदगी में आपको कभी भी निगेटिव की तरफ जाना नहीं पड़ेगा, आप हमेशा सक्सेस रहोगे। इसलिए ये हमें जो भगवान ने दिया हुआ है, यही हमारी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें बिजनेस करना है। थर्ड बात है कष्ट करण्याची जिद्द। कष्ट करण्याची जिद्द मतलब मेहनत करनी चाहिए। बिजनेस बोलो तो मेहनत है। हम लोग, वो जो बाहर के लोग आते, राजस्थान से आते हैं या बिहार से आते हैं, वो मुंबई में आता है तो सिंगाने से लेकर टैक्सी चलाने, बेचने वाले भी वही है भैया। और वो एक साल यहाँ पर आते हैं, दूसरे साल में उसका खुद का रूम हो जाता है, दूसरे अपने 4 बंदों को लेके आता है, फिर बिल्डिंग भी खड़ी हो जाती है अपने ही यहाँ। हम उसको बोलते हैं बाहर से आया और यहाँ पर बिल्डिंग कर। लेकिन आप लोगों ने उसका देखा क्या, उसके पास ये जो थर्ड है कष्ट करने की जिद्द, ये उसके पास है। वो खेड़े गांव में जाके आइसक्रीम बेचता है, रात के 2 बजे उठता है, 2 बजे से वो मशीन घर चला के 5 बजे नाश्ता पानी करके मॉर्निंग में 5 बजे बाइसिकल पे निकल जाता है, और खेड़े गांव में वो आइसक्रीम बेचता है। शाम को आता है, रात को 10 बजे तक खाना पीना खा के सोता है, वापस तो उसके पास क्या है, कष्ट करने की चीज, हार्ड वर्क। अगर आपके पास बॉडी है तो हार्ड वर्क करने के लिए क्या जरूरत। इंसान को 4 घंटे नींद बहुत होती है 24 घंटे। और हम लोग क्या करते हैं, ठंडी का मौसम है, सो रहे ओढ़ के, मम्मी उठा रही है, झोपू दे ना आई जरा अजून टाइम ना, आज लेक्चर बंक करायचं आहे, आज काय लवकर कॉलेज नाही आहे, झोपून राहू, पाऊस चालू आहे मस्त। या शरीराला तुम्ही जर परिश्रम घेतला, कष्ट करण्याची ताकद जर ठेवली, तर तुमचा व्यवसाय जरूर सक्सेस। नेक्स्ट, धोका पत्करण्याची जिद्द। बिजनेस कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, यहाँ से लेकर मैं बोलूं वड़ा पाव का आपने दुकान भी निकाला, वहां पर भी रिस्क है, क्योंकि आपने आज यहाँ पर डाला, 4 दिन के बाद आपसे बढ़िया दूसरा कोई डाल देगा, रिस्क है वहां पर। उसको, उससे बेटर आपको खुद को बनाना है, जब भी आप टिक पाओगे। इसलिए कोई भी बिजनेस में रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर है। आप चढ़ोगे, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीढ़ियां है, मान आप एक साथ तो 4थी सीढ़ी पे 5वीं सीढ़ी पे पैर तो नहीं रख सकते, एक एक की सीढ़ी चढ़ोगे ना। तो एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उस बिजनेस को बढ़ाना। एकदम शुरू में आप बोलेंगे मैं 5वीं पायरी का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो इतना भी हिम्मत मत कीजिए। अगर आपने पास ऊपर की तीनों चीजें हैं तो कर सकते हो, लेकिन एक एक स्टेप आप चढ़िए। इसलिए धोका पत्करण्याची जिद्द, नुकसान होऊ शकते व्यवसायामध्ये, होते सुरुवातीला, कारण अनुभव नसतो, हे नसतो, होते, घाबरायचं नाही। त्याच्यानंतर उसके बाद में चाहिए दूरदृष्टी। दूरदृष्टी म्हणजे काय, इसका मतलब क्या होता है, दूरदृष्टि मतलब क्या होता है, मतलब आगे की सोच।
इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे बैठ के देखिए थाना स्टेशन पे क्या चल रहा है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है। इसका मतलब है दूर की सोच, नई सोच। आपको इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को तो यंग जनरेशन को शायद वो ऐड मालूम नहीं होगी, लेकिन पुराने लोगों को मालूम होगा। एक अशोक कुमार जी थे, वो पान परक की ऐड करते थे। पान परक एक डिब्बा आता था, अपने जेब में से निकाल के शादी में बताते थे। हिंदुस्तान लीवर का वो प्रोडक्शन था पान परक। किसी की दूरदृष्टि गई, किसी की आगे की सोच बढ़ी। अरे यार 20 रुपए का डिब्बा कोई भी नहीं परचेस कर सकता। और उस समय 1984 की घटना है ये। तो 20 रुपए उस समय बहुत बड़े होते थे। 20 रुपए का डिब्बा कोई परचेज नहीं कर पाएगा। तो किसी की सोच गई, उसने पहला पाउच निकाला 1984 में हिंदुस्तान लीवर का। उस समय 2 रुपए का पाउच निकाला। तो उस समय 400 करोड़ का बिजनेस एक ही साल में डेवलप हो गया। तो उसी की दूरदृष्टि देखकर अदर लोगों की भी इमेजिनेशन बढ़ने लगी। आज आप कभी किसी आदिवासी वाड़ी में भी जाइए तो आपको 50 पैसे में शैम्पू मिल जाता है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, लाइफ बॉय साबुन लीजिए, लक्स लीजिए, साबुन वही है कब से, लेकिन दूरदृष्टि शुरू में हेमा मालिनी थी, अब कौन हीरोइन है पता नहीं। बराबर है, साबुन वही है, उसमें कंटेंट वही है, सिर्फ उसका कवर चेंज किया और बिजनेस को वो दूरदृष्टि से आगे ले जाते हैं। जो लोग होते हैं कि अब कोई भी, आप भी वही करना है, आपने भी वही करना, दूरदृष्टि चाहिए। नेक्स्ट पेज पे जाइए सर, नेक्स्ट पेज। हाँ, अभी यहाँ से तक एंटरप्रेन्योर होना है आपको। मेरा टाइम खत्म हो रहा है, शायद ज्यादा बोल रहा हूँ, एक मैं शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ। तो बिजनेस के लिए ये 5 चीजें बहुत जरूरी है, 6 चीजें। पहला तो किसी भी बिजनेस में आपको जाना है तो पहला चाहिए आपका मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे अगर आपका स्ट्रांग होगा, मार्केट सर्वे आपने करना है खुली आंखों से। आप बोलेगे हम खुली आंखों से, बंद आंखों से थोड़ी कर सकते, लेकिन हम आंख खुली होते हुए भी अंधे हैं। अंधे एग्जाम्पल बताओ, ये क्या बोलते हैं, अनीता गई सुनीता के पास, दिख रहा है सुनीता पढ़ रही है, खाना खा रहे, काय करते, सवालात नाही होत, अरे काय करतोय, अरे दिसतंय ना काय करतोय, तरी पण विचारतो, डोळे असून हा नडणे तर काय। इसलिए मैं बोल रहा हूँ खुली आंखों से अपना मार्केट का सर्वे करना है। मार्केट का सर्वे में क्या करना है कि आप जिस एरिया में जो भी बिजनेस खोलना चाहते हो, उससे पहले वो बिजनेस एक्टिविटी वहां पर है या नहीं है, या हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं वहां के पॉपुलेशन कौन सी है, कौन से एज ग्रुप के कितने लोग हैं, नौकरी वाले कितने, किसी की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे, मतलब हमारा ग्राहक कैसे मिलेगा हमें, इसका पूरा सर्च करना, इसको बोलते हैं मार्केट सर्वे। अगर आपका मार्केट सर्वे स्ट्रांग हुआ तो आगे के सारे आंसर ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते। और दूसरा जो मेन जो नियम है, सगळी सोंग आणता येतात पण पैशाचं सोंग आणता येत नाही, असा पण म्हणतो। आणि पैसा फार इम्पॉर्टंट आहे, पण पैसा आज बँकेकडे एवढा पडलाय, ते फोन करून करून विचारतात एनी रिक्वायरमेंट, एनी रिक्वायरमेंट, एनी रिक्वायरमेंट, इतके आपल्याला ते फोन इतरांपेक्षा ते जास्त येतात। पैसा बहुत है बैंक के पास, पैसा आपको बैंक से ही मिलेगा, लेकिन बैंक से लेने के बजाय हमारे डिपार्टमेंट से, मतलब जो हर एक समाज, जाति, धर्म, उन सब के लिए महामंडल से, जो आगे इस स्लाइड पे आएंगे, तो वहां से आपको 10 लाख का मनी विदाउट इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब मेरे ही तरफ एक महामंडल है, अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास मागास महामंडल, जहां पर हम लोग 10 लाख रुपए विदाउट इंटरेस्ट 5 साल के लिए देते। कोई भी कायदेशीर फायदेशीर व्यवसाय असेल, अशा कोणत्याही उद्योगासाठी 5 साल का इंटरेस्ट होता है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए महामंडल डायरेक्टली बैंक को देता है, आपको नहीं देता। आपने खाली प्रिंसिपल जो लिया है वो भरना है। तो पैसे का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पैसा आप मार्केट से भी यूज कर सकते हैं, सेबी से यूज करते हैं। आपको मान लो 10 लाख में नहीं हो रहा है मेरा व्यवसाय, मेरे को 10 करोड़ चाहिए, वो भी मिलेगा। पर डिसाइड आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे अगर स्ट्रांग होगा
तो पैसा कौन सी भी बैंक आपको देने के लिए तैयार है, पब्लिक भी उसमें पैसा डालती है। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्या घर से पैसे डालते हैं? कोई भी नया बिजनेस निकालता है, आज मान लो धीरूभाई अंबानी ने, अनिल अंबानी ने मान लो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री डाल दी, वो क्या घर से पैसे निकाल के डालते हैं क्या? कोई घर से पैसे डालते नहीं। शेयर मार्केट में चले जाते हैं, आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते, पब्लिक से मनी इकट्ठा कर लेते, बिजनेस शुरू। वो आप जब जब आगे बढ़ोगे, वो बहुत आगे की बात है, पहले तो छोटे से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे आप लोग उसमें जाओगे। उसके बाद में मनी आपके पास आ गया, तो मनी आते हम महाराष्ट्रियन लोगों की जो सोच है ना वो बदल जाती है। अरे क्यों यार, मान लो आपको छोटा सा एक एक्झाम्पल देतो, आपल्याला पिठाची गिरण टाकायची समजा आणि तिच्यासाठी तुम्हाला 5 लाख मंजूर झाले, बँकेने 5 लाख दिले, पण तुमच्या मनामध्ये लगेच विचार येतो पैसे आल्याबद्दल, कारण माझ्या रायगड रत्नागिरी मी पूर्ण कोकणात सर्व्हिस केली, तर तिथं काय ज्या काही योजना होत्या त्या योजनामध्ये 2 लाख घेतले, म्हणजे कर्ज घेतलं किराणा दुकानासाठी, पान गादीसाठी, कशासाठी, त्याच्यात त्याने काय 25,000मध्ये किराणा दुकान दाखवलं, बाकीचा हळदी लग्न वगैरे करून मोकळा झाला. कोकणात हळद म्हणजे मोठी असते, आपल्याला कल्पना आहे. तर त्याचा 25,000ची इन्कम येते ना, 25,000 टाकले तुम्ही व्यवसायात, इन्कम तुम्हाला ते 25,000 वरच आहे. 2.25 लाख तुम्हाला भरायची आहे आणि त्याच्यामुळे बरेचसे कर बुडवे जातात. म्हणून आता बँक या स्कीम गव्हर्नमेंटच्या आल्यात, डायरेक्टली सबसिडी कोणालाही दिली जात नाही, परस्पर बँकेला आपलं इंटरेस्ट दिलं जातं, त्याच्यामुळे त्या स्कीम मध्ये सुधारणा. तर मला सांगायचं की ती तिसरी जी गोष्ट आहे, मशिनरी और मटेरियल, मटेरियल टाकायचं राहिलं माझं. जोही व्यवसायामध्ये तुम्हाला मशीन सर्व्हिस सेक्टर असेल तर मटेरियल लागणार आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग असेल तर मशिनरी लागणार आहे, ती स्टँडर्ड असेल. जे तुम्ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्ये दाखवलेली तीच दाखवायची. असं म्हणतात, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार. सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए, सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए, सॉरी अभी मैं ही गलत होगा, आप समझ गए। तो मान लो कि बाजार में एक 200 रुपए की भी एक प्रेस मिलती है, 5,000 की भी मिलती है, लेकिन जो 200 रुपए की प्रेस काम करेगी उतना 5,000 की प्रेस के जैसा काम नहीं करेगी। एक 2 महीने चलेगी, वापस खराब होगी, लेके जाओ इलेक्ट्रिशियन के पास, फाइल डालो, ये करो। तो कहीं ना कहीं ये है कि मटेरियल और मशीनरी स्टैंडर्ड रखनी चाहिए। उसके बाद में आपको लगती है मैन पावर। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी व्यवसाय हो, छोटा हो बड़ा हो, आपको मैन पावर, और मैन पावर कौन सी चाहिए? आप लोग जब इंटरव्यू के लिए जाते हो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी के लिए, तो आप लोग इंटरव्यू देते समय क्या बताते हो? मग मला तर देश सेवा करायची आहे, तुमच्या कंपनीत येऊन कंपनीची सेवा करायची आहे, हे करायची. डू नॉट से these silly words. ये मूर्ख बंदा जो है वही बताएगा, मुझे समाज सेवा करना है, मेरे को देश सेवा करना है, मेरे आपके कंपनी की सेवा करना है। कोई एचआर बोलता है ये फालतू में मत बता भाई, तू अगर मैंने तुझे लिया, तुझे लेने के बाद मेरे को, मेरे कंपनी को क्या फायदा हो, क्या बेनिफिट दोगे, आप क्या दे सकते हो मेरे कंपनी को? मैं तो आपको पैसा दूंगा, लेकिन आप क्या दे सकते हो वो बताना। कभी भी इंटरव्यू में जाओगे तो एक बात ख्याल में रखना, इसलिए वो मैन पावर हे बताना है की नाही, मला वाटतं की तुमचा जो उद्योग आहे तो माझा उद्योग आहे, माझा उद्योग समजून मी काम करणार आहे, माझा पण खारीचा वाटा मी या ठिकाणी देणार आहे, आणि मी मेहनत करणार आहे, याच्यातून असं करणार, अशी आन्सर दिली. आपण असं म्हणतो बघा, भारत माझा देश आहे, भारत आपला देश का नाही म्हणतो? आपलाच देश आहे की नाही भारत, आपला सोडून माझा का म्हणतो? उदाहरण आहे, आपण जेवढे आपल्या स्वतःच्या गाडीतून प्रवास करतो, कुठे थांबतो, तिच्यातून उतरतो तेव्हा तिचा दरवाजा कसा बंद करतो, आणि एसटी महामंडळाच्या गाडीतून जातो तेव्हा उतरल्यावर फाटक कसं बंद करतो? कारण गाडी माझी आहे, एसटी आपली आहे हो, एसटी काय आहे? आपली, गाडी माझी. म्हणून पुढची जी मॅन पॉवर भरताना तुम्ही हे लक्षात घ्यायचंय की मॅन पॉवर अशीच भरा की जी तुमच्या व्यवसायाला माझा व्यवसाय समजेल. नाही तर मग आपल्याकडे नातेवाईकांचा पुरका खूप येतो महाराष्ट्रीयन माणसांना. बायको म्हणते, आहो तो माझ्या चुलत भावाचा मुलगा आहे ना, ग्रॅज्युएट झालाय, घरीच बसलाय, त्याला बोलून घ्या, कामात येतो. असं ज्या कोणी उद्योजकाने केलं त्याचा उद्योजक तिथंच डुबतो. त्याला जर आणलं आपल्या रिलेटिव्हला, हे दोन्हीकडचं सांगतो मी, बायकोकडचा आणा, नवऱ्याकडचा आणा, कोणाहीकडचा रिलेटिव्ह आपल्या व्यवसायामध्ये मॅनपॉवर म्हणून वापरू नका.
जर का त्याला तुम्ही आणलं तर तुमचा व्यवसाय एका वर्षात डबल. आणि तो तुम्हाला वरून सांगेल की 1 वर्ष तुम्ही राबून घेतलं, त्याने आपला खिसा गरम केलेला असतो, कारण तुमचं लक्ष नसतं. आपलाच नातेवाईक बसलाय तो गल्ल्यावर, आपलं लक्ष नसतं, त्याचा खिसा गरम असतो, आणि तो वरून तुमच्यावर रुबाब करेल. तुमचा व्यवसाय बंद झाल्यावर काय दिलं नाही तुम्ही मला वापरून घेतलं वरून त्याचा उपकार तुमचा. म्हणून अशी मॅनपॉवर कधी घेऊ नका. मॅनपॉवर मी सांगितली की जो तुमच्या व्यवसायाला माझा व्यवसाय समजेल अशी व्यक्ती मॅनपॉवर. त्याच्यानंतर 5वा एम आहे मार्केटिंग. मार्केटिंगचं स्किल आहे मित्र, हे पण आपण शिकलंच पाहिजे व्यवसायामध्ये. म्हणून मी बोललो, जसं उदाहरणार्थ साबणाचं उदाहरण दिलं. ब्रश, सुरुवातीला टूथब्रश अगदी फ्लॅट असायचे, नंतर कोणाची तरी कल्पना केली, त्याला 2-3 बाजू कचरून टाकलं. टोमॅटो वर आपल्याला मसूर तकलीफ नाही होती. हे मार्केटिंग स्किल आहे. दूरदृष्टी मार्केटिंग मध्ये हे मार्केटिंग. आपल्याला मार्केटिंग काय की आपल्याकडे एक असलं पाहिजे. म्हणतो ना मराठीत म्हण आहे, बोलणाऱ्याचे माती विकली जाते आणि न बोलणाऱ्याचे सोनही विकलं जाते. म्हणून आपल्याकडे स्पीकिंग म्हणजे डायलॉग करण्याचं, बोलण्याचं हे स्किल असलंच पाहिजे. म्हणून मार्केटिंग करता आली पाहिजे. आणि सगळ्यात शेवटचं हे मॅनेजमेंट. आपल्याकडे थोडासा व्यवसाय बरा चालायला लागला, 4 व्हीलर आली, 4 नोकर झाले, मग आपण लगेच भाई उडू. आपल्याला 4 लोक भाई म्हणायला लागतात. त्या गाडीमध्ये 4 मित्रांना घेतो आपण, त्यांना उघडला, थोडा काढल्या, तरी ढाब्यावर बसलं, व्यवसाय ठेवतो. तुम्ही रात्री 9 नंतर मार्केटमध्ये फिरा, सर्वे करा. दुकानं शटर बंद झालेले असतात पण आत लाईट चालू असतात. त्याचा तो मालक बसलेला असतो किंवा त्याचा एक नोकर तरी त्याच्या बरोबर असतो किंवा त्याचा मुलगा तरी असतो. काय करतात ते तिथं पत्ते करतात का? त्यांचा शेवटचा तो आहे तो मॅनेजमेंट. रोजच्या रोज रात्री ते आफ्टर क्लोजिंग शॉप, कोणताही व्यवसाय तो बंद केल्यानंतर ते स्टॉक चेक करतात. कोणत्या वस्तू आता शिल्लक नाही राहिल्या त्याची ऑर्डर द्यायची, कोणाचा पैसे द्यायचे बाकी आहेत, कोणाकडून उधारी यायची बाकी आहे, कोणता माल संपलेला आहे, या सगळ्या गोष्टींचा तो एका तासामध्ये आढावा देतो आणि दुसऱ्या दिवशी लगेच. आणि त्याचं मॅनेजमेंट आता धीरूभाई अंबानी किंवा अदानी असेल, अनिल अंबानी असतील किंवा मोठा उद्योगपती, हा काय एवढे उद्योग आहेत, त्या उद्योगांमध्ये रोज जातो का होतो फॅक्टरीमध्ये? कुठं जात नाही ते. घरी बसल्या ऑनलाईन सीट मागून घेतात, फक्त बॅलन्स शीट बघतात. मॅनेजमेंट बाकी काही नाही. त्यांना तिथं आकड्यांचा खेळ आहे. त्या आकड्यांच्या खेळमध्ये त्यांना वाटली इथं मायनस प्लस दिसतं, त्याला अंडरलाईन करतात. त्या कंपनीचा HR ला, त्या कंपनीचा प्रोडक्शन मॅनेजरला फोन करतात की इधर डाऊट आहे, इसमें देखो, खतम बात झाली मॅनेज. म्हणून ते एक व्यक्ती एवढे सगळे व्यवसाय तो सांभाळू शकतोय ना, कारण त्याचं मॅनेजमेंट. आणि या सगळ्या गोष्टी जर तुमच्याकडे असतील तर मला वाटतं की तुमच्या व्यवसायाला वृद्धिंगत होण्यासाठी, वाढण्यासाठी कोणीही रोखू शकत. तर मला असं वाटतं की एवढ्या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला उद्योजकावर सांगितल्या, नोकरीच्या सांगितल्या, स्किल डेव्हलपमेंटच्या सांगितल्या. याच्यापैकी आता मला किती लोक उद्योजक होऊ इच्छिता, हात वर करा. गुड गुड, व्हेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक. मित्रांनो, उद्योजक होण्याचा फायदा काय आहे? शेवटची एक लाईन सांगतो. आज मी डू नॉट स्पीक टू वन अनदर, आपसामध्ये बोलू नका. त्याला एक शेवटची लाईन सांगतो. नोकरी आणि उद्योजक काय फरक आहे? माझी पानाची गादी आहे, एक माझा मित्र त्याची पानाची गादी आहे, समजा किंवा वडापावचं दुकान आहे, साधं भाजीपाल्याचं दुकान आहे, छोटाच बनतोय मी, मोठा म्हणत नाही. आणि मी एक बॉस आहे, आज डेप्युटी कमिशनर आहे, मला आज 1.25 लाख रुपये पगार आहे समजा, पण मला कोणाला तरी येस सर म्हणावं लागतं. साधा फोन तरी आला, येस सर 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 सर, करतो सर करतो सर, ही माझी कंडिशन. पण तो जो आहे त्याला कोणाला सर म्हणायची गरज नाही. माझ्या मित्राला, त्याला दुकान सकाळी 8:30 ला उघडायचं, त्याला वाटलं आज नाही उघडत, मी 8:30च्या ऐवजी 9 ला उघडतो. आज माझ्या नातेवाईकांना भेटायला जायचं, आजच्या दिवशी दुकान बंद ठेवतो, कोणी विचारणार? त्याचा बिझनेस वाढत जाईल, त्याला कोणी विचारणार नाही. आता त्याच्या खाली तो माणसं राहणार, ते त्याला म्हणतील सर. म्हणून
कधी जिंदगीमध्ये एक लक्षात ठेवा, डू नॉट से येस बॉस, बी अ बॉस. कोणाला येस बॉस म्हणण्यापेक्षा तुम्ही स्वतः बॉस व्हा. जर का तुम्ही बॉस झालात आणि एक 4 कुटुंब, 5 कुटुंब, 10 कुटुंब, म्हणजे एवढे 10, 12, 20 लोकांना जरी तुम्ही नोकरी देऊ शकला, तर तेवढे कुटुंब तुम्ही पोचतायत, तेवढ्यासाठी तुम्ही देव झाला. एवढ्यासाठी तुम्ही माणूस नाही राहिला, देव झाला. कारण तुमच्या एकट्यामुळे सगळं कुटुंब त्यांचं चालतंय. म्हणून लक्षात ठेवा, डोंट से येस बॉस, बी अ बॉस. आज या ठिकाणी मला संयोजकांनी बोलून आपल्या समोर माझे विचार व्यक्त करण्याची संधी दिली. आपणही जवळपास 1 तासापासून माझं बोलतो कारण याच्यावर मला एक गोष्ट आठवली. 1 तास झाला. शेवटचं जरा सांगतो की अशाच एका कार्यक्रमाला गेलो होतो. मला टाइम दिला होता अर्ध्या तासाचा. एक हातात आला. पॉलिटिकल लोकांसारखे ते मला असं वाटतं की मी जास्त सांगावं 4 गोष्टी. माझ्या एका ठिकाणी लेक्चर होतं. लेक्चर चाललं अर्धा तास झाला, 2 तास झाला, 1 तास झाला. मागून एक जाड माणूस उठला बाबा आणि हातात त्याच्या दंडुका होता. तो आला माझ्याकडे चालत असत व्यासपीठाकडे. माझं बोलणं चालू होतं. माझं काय त्याच्या जवळ येऊन द्या तेव्हा लक्ष गेलं. मी त्याला बघून काय करतो. तो म्हटला तुम्ही चालू द्या. म्हणजे चालू द्या. मी त्यांना शोधते ज्यांनी तुम्हाला इथं बोलवलं. जोक सपाट. शेवटी कंटाळले होते. म्हटलं थोडस हास्य फिरवा म्हणून एक किस्सा सांगितला. किस्सा तसा काही झालेला नाहीये. तर मी पुन्हा एकदा सगळ्यांचं आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. आता मी तुम्हाला 5 मिनिट देतो की क्वेश्चन अँड आन्सर्स. आता तुमचे काही क्वेश्चन्स असतील तर डू नॉट शाय. कहते लाज नारी का उत्तम गहना है, लेकिन इतना भी मत शर्माओ कि शर्म खुद शर्म जाए. इसलिए मैं नारियों से भी अपेक्षा करता हूं कि आपके क्वेश्चन इरेज कीजिए. आपको चाहे तो माइक में वहां पर भेजता हूँ. इस माइक से मैं आपको आंसर देता हूँ. माइक चला प्रश्न विचारा जरा प्लीज. कारण एकाने जर एक शंका विचारली तर 100 लोकांचं ते समाधान असतं. Yes, students, those who are having questions, please raise your hands. The volunteers will get the mic to you. Please raise your hands if you're having any questions. मग ते असं झालं तर कोणीच प्रश्न विचारला नाही. आहेत का? विचारा. युथ साठी कोणत्या स्कीम्स आहेत? युथ साठी या सगळ्या होत्या. युथ साठीच होत्या या सगळ्या स्कीम. एनीबडी कॅन डू बिझनेस. एनीबडी कॅन गेट सिट डाऊन प्लीज. बरोबर आहे. नाही त्यांचा आणि तरुण काहीतरी फरक झाला असेल. या सगळ्या बेरोजगार मुलं, तरुण मुलं याच्यासाठीच या योजना आहे. 18 ते 45 वयोगटातील कोणताही व्यक्ती या सगळ्या स्कीम मध्ये बसत असतो. मी जी आता एनीबडी. हे असं झालं बघा. वर्गात तुमचे टीचर किंवा मी टीचर असताना अनुभव आहे मला. शिकवलं समजा तासभर 45 मिनिटाचा तास 47 मिनिटाचा तास असतो. समजलं का रे? येस सर. सांगा मग याचं उत्तर. एक तर ते पूर्ण समजलेलं नाही. सांगितलेलं आजचं किंवा इतकं समजून गेलंय की विचारायची आता काही गरजच नाही. मी सेकंड पार्ट समजतो की मी सगळं काय सांगितलं मला सगळं समजलं. पण इफ यू हॅव एनी डाउट यू कैन कॉल मी एनी टाइम. माय नंबर नोट कर सकते हैं मेरा नंबर. यस मैम. हाँ गुड क्वेश्चन. मैंने सिर्फ बता दिया है कि पैसा कहाँ से मिलेगा, लेकिन वो पैसा निकालने के लिए क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट वो बताया नहीं. मेरी वेबसाइट खोलिए. आगे जाके आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मिल जाएगी और कौन कौन से महामंडल है वो भी मिलेगा. वो 6 सेम थे ना, उसके आगे जाइए. तर याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय लागतंय तुम्हाला? मिनिमम 4थी पास शिक्षण लागतं. त्याच्यानंतर तुम्ही कोणता व्यवसाय करणार आहात त्याचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लागतो. त्याच्यानंतर तुमचं आधार कार्ड. त्याच्यानंतर तुमचं 3 वर्षाचा ITR. ITR नसेल तर मग 6 लाखाच्या आतला उत्पन्नाचा दाखला. आणि अजून काय तुमचे स्किलचे काही किंवा सर्टिफिकेट असतील तर ते त्याला जोडायचं. याची व्यतिरिक्त काही डॉक्युमेंट लागत.
स्लाइड तीच ना, आता जी होती तीच स्लाइड, फक्त ते 6M होते ना आता दाखवले लास्ट, त्याच्या पुढे जावा, त्याच्यात आहे. आणि ह्या सगळ्या पोर्टल आता ऑनलाईन झालेले आहेत. तुम्हाला कुठेही ऑफिसला जायची गरज नाही, कोणत्याही ऑफिसला डॉक्युमेंट सबमिट करायची गरज नाही. जसं आमचा अण्णासाहेब पटेल आर्थिक विकास महामंडळ आहे, आमचा महास्वयंवरूनच 15/7/22 फाईलचं नाव आहे जागतिक कौशल्य 15 तारीख. तर तुम्हाला ऑनलाईनच भरायचंय. सगळ्या महामंडळाच्या आता सगळ्या योजनांचे मला ऑनलाईन, पूर्वी तुम्हाला समजा हेडक्वार्टर आहे ठाण्यामध्ये, तुम्ही राहतात कुठं तरी शहापूर वगैरे कुठल्या तरी भागामध्ये राहतात, पण एवढ्या लांब तुम्हाला अलिबागला किंवा सॉरी ठाण्याला यावं लागतं. ते आता ठाण्याला यायची गरज नाही, तुमच्या घरी बसून तुम्ही ऑनलाईन फॉर्म भरू शकतात. बरोबर, तेच पेज. तर ऑनलाईन फॉर्म भरायचे. प्रत्येक महामंडळाचा आता वेब पोर्टल झाला. सर्वात प्रथम आमच्या महामंडळाचं झालं होतं, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचं ऑनलाईन झालं. त्याचं बघून आता मग ते महात्मा फुलेवाल्यांचा असू द्या, समाज कल्याणवाल्यांचा असू द्या, मी बोललो ना सगळ्या जाती धर्मांसाठी महामंडळ आहे. आणि जो कुठंच बसत नाही समजा असं वाटतं, तो कोणत्याही कास्टचा असो कोणत्याही असो, त्याच्यासाठी TIC जिल्हा उद्योग केंद्र आहे. हे आहे छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास आयोग, हे आमचं महामंडळ आहे. फक्त अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ. अशी कोणकोणती महामंडळ त्याची यादी लिस्ट लास्ट मध्ये. नेक्स्ट. आता याच्यासाठी कर्ज व्याज परतावा योजना असेल तर त्याच्यासाठी कोणासाठी आहे ती, कोणकोणती व्यक्ती आहेत, सगळे त्याचं उद्योग व्यापार निधी कोणताही मी बोलला, जो कायदेशीर आणि फायदेशीर व्यवसाय असेल त्याच्यासाठी तो व्यवसाय आहे. इतर अटी व शर्ती कागदपत्र योजनेचा लाभ घेतलेला असा एवढं सिव्हिल चांगला असा. आपण जर यापूर्वी कोणत्या एखाद्या सोसायटी मधून पतपिढीमधून, आणि सगळ्यात महत्वाचा एक धोका असा आहे नवीन मुलांना क्रेडिट कार्ड वापरण्याची सवय आहे. किती लोकांकडे क्रेडिट कार्ड आहे, हात वर करा. आहे ना क्रेडिट कार्ड? नाही घेत? नाही. कधीही ते क्रेडिट कार्ड वापरू नका, कारण आपण ते विसरून जातो. एखादी वस्तू पैसे नाहीत म्हणून त्या क्रेडिट कार्डचा वापर आपण अनावधानाने करतो, आणि 2,000 वस्तू घेतलेली असते आणि तो पैसा आपण भरायचा विसरतो. आणि मग ते कधी जेव्हा तुम्ही कोणतं कर्ज मोठं घ्यायला गेलात की तुमचं सिव्हिल मध्ये दिसून येतो. आणि ज्याचा सिव्हिल खराब असेल, नियर अबाउट 70च्या वर तुमचं सिव्हिल असेल, तरच तुम्हाला कोणतीही बँक, जरी महामंडळ तुम्हाला फक्त इंटरेस्ट देतं, महामंडळ कधीही पैसा देत नाही. तुम्हाला उद्योगासाठी बँकच पैसा देणार आहे. तुम्ही ऑनलाईन फॉर्म भरायचा आहे, त्याची फाईल ऑटोमॅटिक बँकेला जाते, ते LOR जनरेट होतो, लेटर ऑफ इंटरेस्ट, तो तुम्ही बँकेला दाखवायचा. आणि नंतर जेव्हा तुम्हाला बँक सांगते की आम्ही तुम्हाला कर्ज द्यायला तयार आहोत, तेव्हा मग त्याचा हार्ड सेट बनवून एक आमच्या कार्यालयात द्यायचा आणि एक महामंडळात. असं प्रत्येक महामंडळाची साधारणतः रचना. खूप चांगला प्रश्न विचारला. नाव एनी क्वेश्चन? आय थिंक मला पुन्हा एकदा सगळ्यांचं धन्यवाद. येस, कॉन्टॅक्ट, हा राहिला बघा, कॉन्टॅक्ट नंबर घ्या 9820. फक्त रात्री 9 नंतर नका करू. तुम्ही शनिवार रविवारी सुट्टीच्या दिवशी करू शकतात, काही प्रॉब्लेम आहे. आणि वर्किंग डे मध्ये मीटिंग मध्ये जर असेल मी, तर फोन उचलणार नाही, पण मी कॉल बॅक करत असतो, तो कोणीही असतो. तर घ्या 9820 45 22 2264. मला पुन्हा एकदा विनंती करायची आहे की नोकरीवाल्यांनी मला भेटू नये. नोकरी कुठे आहे साहेब? मी सांगितले मार्ग भरपूर आहेत, पण ज्याला कोणाला असं वाटतं की मला काही असू दे, व्यवसाय करायचा आहे, त्या व्यक्तीने माझ्याकडे जरूर यायचंय, मला फोन करायचा. आणि सगळ्यात पहिली गोष्ट, आज आमच्या mahaswayam.gov.in या वेब पोर्टलवर सगळ्या मुलांनी, सर इकडनं एक फोटो घ्या ना, राजू सर वरून या, इकडनं जरा एक फोटो घ्या, म्हणजे मॉब त्याच्यात आला नाही आपल्या. तर त्या महास्वयं पोर्टलवर
सगळ्यांनी रजिस्ट्रेशन करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. याच्याने तुम्हाला सगळ्या गोष्टी सॉल्व्ह होतात. महामंडळ, इतर महामंडळ पण त्याला रिलेटेड आहेत. महामंडळांची यादी सांगायचं राहिलं लास्ट पेजवर होती. तेवढा काही वेळ दिलेला होता तेवढा संपलेला आहे. जास्त बोलणं म्हणजे ते परत पेलवान येईल तिकडनं. पीपीटी मुलांमध्ये शेअर करून द्या. हा, माझी पीपीटी इथं मॅडमच्या लॅपटॉपवर आहे. त्या आपल्या प्रत्येकाला शेअर करून देतील आपण कधी, आणि ती बघत असताना तुम्हाला अडचण येईल. लक्षात आलं का? आता आपलं कसं चालू आहे, कन्व्हर्सेशन चालू आहे, संभाषण चालू आहे, पण ती बघितल्यानंतर हा या पॉइंटवर सरांनी काय सांगितलं, मग सरांना फोन करूया. तर तुम्ही कृपया मला कधी फोन करू शकता. आय विल आन्सर युअर क्वेश्चन. थँक्यू, धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you. Thank you so much, sir, for enlightening our students with, first of all, with various employment opportunities like MPSC, UPSC. Also letting our students know about Mahaswayam portal, its registration process, encouraging our students to know about entrepreneurship opportunities available in the field, and also about the support that government is extending from their side. Last but not the least, about the 6 M's that are required to be a successful entrepreneur. I am sure our students have taken the requisite cues for the future development. Once again, students, please give a round of applause for Shalik Pawar, sir. So moving ahead, indeed, the first session was really insightful. But my friends, this is not the end. Let us move very swiftly towards the second power-packed session by our another illustrious guest speaker, Dr. Vijay Tarel, sir. Before we begin the session, let me have the privilege to introduce our illustrious guest. Sir is a management consultant, an advisor to startup incubators. Sir was a former CEO of COP's Bhau Institute of Innovation, Entrepreneurship, Leadership for 5 years. Prior to his entrepreneurial ecosystem developmental journey, Sir had a professional career spanning over magnanimous 31 years in global IT service organization, including some of the very reputed companies like Tata Consultancy Services, Silverline Technologies, Cybertech Systems, and many more in the list. For majority of his career, Sir was the member of executive management responsible for overall IT service delivery management, pre-sales, resource management, business growth, and overall growth of the delivery organizations. In the year 2017, Sir started his own consulting to support small and mid-sized IT service organizations by providing expertise in the developing efficient delivery organizations. He has also decided to support the startup community and is doing same for the last 5 years. Sir has supported and mentored about 150 plus startups at Bhau Institute and has been a very active member of developing entrepreneurship ecosystem across various states of India. He has been the jury on many panels for startup evaluations. Talking about his academics, Sir has graduated in the mechanical engineering from a very reputed institute, VJTI, in the year 1984. And Sir has MTech from a prestigious institute, IIT Bombay, in the year 1986. My dear friends, this is just a brief introduction of Sir's achievements. For today, Sir is going to enlighten all of us on entrepreneurship and role of incubators and startup ecosystem. So I think I should not waste more of a minute of yours, and I request Sir to address the gatherings. Over to you, sir. Sorry for interruption. Sorry sir, you may take dais. एक गोष्ट, एक बात बताने रह गई है, क्योंकि सर उस बात पर लेक्चर लेने वाले थे, इसलिए मैंने उसको हाथ नहीं लगाया. लेकिन सर का लेक्चर खत्म होने का बाद आपको जो भी बंदा इनोवेशन में जाना चाहता है, जिसके पास नई आइडियाज है, नई संकल्पना है, तो उसके लिए हमारा ही डिपार्टमेंट काम करता है, इनोवेटिव सोसाइटी करके, जिसमें मैंने वो पहली स्लाइड में इनोवेशन शब्द रह गया है. तो उसके लिए अगर नया स्टार्टअप हमारे पास आता है, सर से गाइडेंस लेके आप स्टार्टअप में एंट्री कीजिए,
तो हम लोगों आप लोगों को गवर्नमेंट तरफ से 15 लाख का पहला ऑर्डर दिया जाता है, जो स्टार्टअप वीक सेलिब्रेट किया जाता है हर साल फरवरी और मार्च में, हर साल। और उसमें से कुछ बंदे चुने जाते हैं डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट के बाद में स्टेट से, स्टेट के बाद में वहां पर सेंट्रल में, और सेंट्रल में से 4 व्यक्ति ऑल ओवर इंडिया से एब्रॉड भेजे जाते हैं नए स्टार्टअप को। इसलिए सर स्टार्टअप के बारे में पूरा बताएंगे, और आगे जो कुछ भी गवर्नमेंट की आपको हेल्प लगती है वो हमारे डिपार्टमेंट से होती है, उसके बारे में भी मेरे को आप लोग इन फ्यूचर में कॉल कर सकते हैं। हाँ, ओके, थैंक यू सर। Hello. Good afternoon. Great to see a group of young students who are the future of India. Sir was just telling Mr. Shalik Pawar about the average age of India today is 29 years. And that's a great boon to India. But it can be a great disadvantage for India. If we do not utilize that great youth manpower effectively, it will be a major disadvantage. सरांनी सांगितलं उद्योजकता, entrepreneurship. त्यामध्ये आपण थोडाफार विचार करूया. So innovation, entrepreneurship म्हटल्यानंतर आपण म्हणतो उद्योजक. उद्योजकतामध्ये एक नवीन कल्पना आपल्या डोक्यात येते. ती कल्पना or that idea, is it innovative idea? Innovation म्हणजे काय? Something new. काहीतरी नाविन्यपूर्ण करायचं. प्रत्येक उद्योजक तुम्ही बघितला तर त्याचं they develop something new, something innovative. पण इनोव्हेशन म्हणजे काय? लेट्स टॉक अबाउट इट. म्हणजे इनोव्हेशनचे किती प्रकार आहेत? इथं तुम्ही बघाल स्लाइड वरती, there are different types of innovation, 9 types of innovation. There are few of them I would like to just touch upon, and actually I would like answers to some of them. Let's talk about business model innovation. प्रत्येक इनोव्हेशन म्हणजे टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन असतंच असं नाही. It is not that every innovation is a technology innovation. There are many innovations which are actually many of the innovations are not technology innovations. But technology can be a enabler. It can be a foundation for your innovation. But not that every innovation is technology innovation. आता business model innovation, can somebody give me? It's a different way of doing business. That particular idea or that particular problem. Idea म्हणजे काय? It's some problem and that you are trying to solve by different way. That's your idea. Now, can somebody tell me what could be a business model innovation? New ways in which we can do delivers and captures value. What is a business innovation? Can anybody give me an example? की नवीन प्रकारे आपण बिझनेस कसा करतो की कुठले येतात तुम्ही I think there are so many examples of business model innovation in current last 10 to 15 years that have come. Lot of new startups have, most of the startups that have come in last 10 years are business model innovation, most of them. Can somebody tell me? Okay, मी एक MBA चायवाला. ओके गुड. त्यांनी काय वेगळं केलं? नाही पण वेगळं काय केलं? बाकी पण दुकान आहेत ना चायवाले,
Okay. Okay. How many of you know of Airbnb? Okay. What is Airbnb? Yeah, it's a new business model basically. पूर्वी आपल्याकडे पेइंग गेस्ट लोक होते राहायचे माहितीये पेइंग गेस्ट म्हणजे घरामध्ये एक रूम एक वेगळी आहे अवेलेबल तर कोणाला तरी द्यायची भाड्यावरती 2 दिवसासाठी 4 दिवसासाठी महिन्याभरासाठी 2 महिन्यासाठी. Somebody thought of that model and change into the Airbnb. Does Airbnb actually own any of their flats or houses or anything? No. They just do a service. What they do? Somebody wants a room for 2 nights, 4 nights. Somebody wants a bungalow for 2 days, 4 days. I have a bungalow. I have a flat. I have a room in my flat, which can be given on rent. Connect the two. That's the business model of Airbnb. आपल्याकडे ब्लॅक अँड येलो टॅक्सीज किती वर्षापासून आहेत? 30-40 वर्षापासून आहेत. What is Ola? What is Uber? These are also business model innovations. So, yeah, if you look at it, Airbnb, Oyo rooms is another great example of business model innovation. So, are these any of the technology innovations? No. They are all business model innovations. Somebody thought that I can do differently a business. Let's talk about disruptive innovations. Already but disruptive म्हणजे काय? Somebody thinks of disrupting the entire current business model. आता आपल्यामध्ये पूर्वी तुम्ही सगळे अजून यंग असता तेव्हा तुम्हाला माहित नसेल पण पूर्वी कोडाक फिल्म्स मिळायच्या. 12 पिक्चरचं फिल्म 24 पिक्चरची फिल्मचं हे मिळायचं आणि ते आपल्या कॅमेरामध्ये जायचं. So you can only click 12 images, 24 images. And Kodak was the world #1 leader in film production in the early 90s. नंतर काय झालं? Somebody came up with a great idea of pictures, digital pictures, your digital cameras. त्याच्यामध्ये you don't need a film. So what happened? The entire Kodak production completely zero. There is no need of Kodak films anymore, and now you don't see it anymore because now you can click as many pictures to digital cameras, as many that you want. Then somebody came with a new idea. So this is called a disruptive innovation. You disrupt the entire business that was there. Somebody came up with a new idea. Why should I carry a digital camera separately? Can I do something else? Because today प्रत्येकाकडे मोबाईल फोन असतो. Okay. Sir, I don't need a digital camera separate to take pictures. Why can't I put the same technology into a mobile phones and take the pictures? So everybody today does the pictures using mobile phones. So that disrupted the digital cameras completely. अजूनही डिजिटल कॅमेरा आहेत ते कुठले आहेत? If somebody is a photographist, somebody who is like taking a photograph, so he's using digital camera. But that is 1 in 300. Whatever pictures he is taking, you also can take the picture using your cell phone, right? But he's requiring because that's a specialized camera. But for a normal person, you can. So that's so what is different? Kodak films to digital cameras to the cell phones today. See the innovation. This is a different type of innovation. Netflix is another good example. Again, Netflix, Amazon Prime, Sony Live, Z Live. There are a lot of these channels are there which you can subscribe. Previously, almost 15-20 years back, there used to be video cassettes that used to come.
which you put into a VCR, video cassette recorder, or VCP, video cassette player, and you can play them. And there were a business models where you can go and rent this out for a day, for a picture, whatever you like. But today, you don't need that because the entire video library is available in a cloud. Cloud means some storage somewhere in the world. And you can access that through your cell phone, through your internet connectivity. So that's again a completely disruptive model. Today, do you see anybody selling video cassettes for rent? No. You don't need it. That entire business has changed. You look at it, incremental innovation. Incremental means somebody is already having some product, some business. You just tweak it, you modify it so that the customers, your users, can get a better benefit. Gillette blades started with a razor, started with one single razor, two twin blades, two razors. Now around, you add shaving ची. You don't need to do the yoga for your mouth, but just switch the blade and it will swell itself. See, these are the innovations, and these companies have to keep doing these innovations and our businesses so that your customer gets new benefits or new models or new businesses. Coca-Cola, there are so many varieties of Coca-Cola are there today. Diet Coke, and so many varieties. Cadbury. If you see, Cadbury chocolate was there 20 years back also. But today you still get new Cadbury's versions because they have to serve the customer. Product innovations. These are the technical products innovations. Most of them are technical products. But what are those? Those are the new products that come into the market. आता बरेच पूर्वी आपल्याकडे घड्याळं होती. Today, watches. A lot of people don't use watches, or those who use watches, they are smart watches, like the Fitbits. So you use Fitbit because it's just not a watch, but it also measures all your health parameters while you are walking, while you are sleeping, while you are running. Everything it measures. So these are smart watches. So that's a product innovation. Apple products. Most of the Apple products are product innovation. When you think about iPad, iPod that came in first, iPads, Apple laptops, these are all Apple products or Apple innovations. Another good example of innovation, product innovation is LED light bulbs. Previously, we used to have bulbs and this thing. To save the energy, a new product came in, that is the LED light bulbs. This is a process innovation. About almost 20 years back, one of the major process innovation was in manufacturing industry. It happened. That is the assembly line. Previously, everything used to be done sequentially, but in a different machine. So, assembly line came in where you put the raw material with the different phases of the material. It gets processed, and end of the day, you get product. The entire assembly line is being designed automatically. That's the innovation, which is the process innovation. So these are the different types of innovations. The purpose of me telling you this is you can actually think of innovative ideas in any of these innovations. But how do you, how do you get ideas? If you ask, if some of the startup entrepreneurs, because I deal with startups almost day in and day out, I must have evaluated maybe about 1,500 startups in my last 5 years. When you keep talking to these entrepreneurs, who is an entrepreneur? When you talk to them, everybody has a different idea, but how do they get these ideas? And those people are like they have 10 years experience, 40 years experience. I have startups which are as young as you or even younger than you. One of the youngest startup I have seen was an 8th standard student
who came up with an idea of a folding bicycle so that he can fold his bicycle in his backpack, carry it to the office or school anywhere and use it there, open it, unfold it, start using the bicycle. 8th standard student. There's another student I came up across was 10th standard student who came up with an idea for robot. Ideas but an idea येतात कशा? I think you need an eye of a observer. You need to observe to get the ideas. What is an idea? Idea is a solution to some problem. Idea is a solution to some problem. I am sure when you are going around in your day-to-day life, you see lot of problems. Then you start thinking, how can I solve this problem? Is there somebody solving the similar problem? Then how can I be different? That's a new idea. So that's how you get ideas. When you observe. Lot of times we observe. I will tell you a great example of how the idea came. One day a girl was traveling with his father in a train. They come to the station and they find that the train is late by few hours. Now what happens? They have to sit somewhere for 2-3 hours because the train was late, entire station was full. There was nobody was standing. No seat was available. And her father was almost maybe 60-70 years of age. She was thinking, this is an observe. There is a problem that there is no seat available for her father to sit for next 3 hours on a train platform. There are two ways one can think. I can blame the government. I can blame the railway authorities, saying that why can't they provide us space or sitting space or anything? Or I can think, is there a way I can solve this problem? She came up with an idea saying that she was carrying her pull-on bag. She told the father, okay, why don't you sit for some time? I will just pull up this thing and side on the back. That was not feasible. But then she started thinking there must be some solution for this. What she did was she came up with a prototype. You have a handle which pulls for a pull-on bag. At the back of the handle, she created a seat, which you just flip back. It will become a seat. When you are not required, you just flip back the extension, so it becomes part of the handle. She gave that idea to some of the bag manufacturers, and maybe you will see that in future you might get that kind of a bag where pull-on bag, where as a part of the handle, there's another attachment which you pulls it up, becomes a seat for you. So it's a simple example, but what you can do is you observe the problem. Another great example is somebody in Gujarat, in a distant village, was sitting in below the tree, and he found that lot of these village women are carrying the water in their matka or handi on their head, and they travel for multiple kilometers. So naturally, it is a pressure on their head. He was sitting and he just thinking, a pressure on your neck, head, and everything. What did he came up with an idea? A tripod which fits on your shoulders, and there's a tripod, and you put it. So the weight, instead of coming to your head and the neck, it comes on your shoulders, which are much more stronger. Simple ideas, but they become great products later. Okay. So who is entrepreneurship? We are also talking about udyojakta and entrepreneurship. Who is an entrepreneur?
Entrepreneur is somebody who is a person. Entrepreneurship is a process of converting your idea into a business. And the outcome of that entrepreneurship is an enterprise. If you think of any of the enterprises today, if you think of any of the businesses today, they started with some idea. There was an entrepreneur who converted that idea into a business. And that's the process of entrepreneurship. आत्ता मागच्या सरांनी सांगितलं, don't become a yes boss, but be your own boss. That is one of the reasons why entrepreneur is there. Entrepreneurship means, and I started saying that India's young age today is 29. There is one more slide I have. Can you just go next? Yeah, before that, yeah, that's fine. So India's young age is 29, but we need to provide a employment to this young age. So that's fine. Yeah. So entrepreneurship is a start. Basically, a entrepreneur is a startup leader or a founder who converts his idea into a business, right? So during the entrepreneurship journey, okay, what happens? There's a startup journey. There are many things that happens. You get an idea, then you think, can I convert a business out of this idea? Can I generate a business out of this idea? Okay. Now, how does that happen? How does the idea become actually a business or enterprise? There are some stages of entrepreneurship. Ideation. Ideation is a problem identification. What I told you is observe the problem. Look at how can I convert that problem? How can I find a solution to that problem? That's an ideation. Finding the problem, finding the pain points of the customer. In the example that I gave you, 2 examples. One of them was about the girl who found a problem of not having a seat on a sitting space on a train station. That's a problem. What is the pain? An elderly father or elder people do not have sitting space. That's a pain. Now find the solutions, multiple solutions. One is talk to the government, talk to the railway authorities. You yourself try to find the solution. So find different solutions of that problem. Find out which one you can actually convert into a business. Problem solution fit. Whether that solution actually solves the problem. That's the problem solution fit. And then you find out if your solution, somebody else is solving the problem. Today, suppose we talk about Oyo and Uber. When Oyo came into picture, so no, sorry, not Oyo, Ola. When Ola came into picture, okay, at that time, Uber was already there. Uber was a US-based company, already started in US and did not come to India. Why did Ola started? What was the different thing Ola did? So when Ola founders started thinking about Ola as a company or some solution, they must have seen the Uber is solving the problem similarly. But then they started thinking, can I do different business model? So there's a difference between Uber and Ola models. And that's what is the point is explore competition and find your USP. What is USP? Anybody? Some of them are management students here, I believe. Or what is USP? Unique selling proposition. Okay. So something unique. My solution is something unique. It's different than what everybody is solving. There's some uniqueness is there. That's a USP. It's also called DVP sometimes, differentiated value proposition. So something different than what the current value proposition is. Then you start building MVP. MVP is minimal viable product. So basically you start thinking whatever the idea, the solution. Now you want to build that solution. MVP is building the solution. How you build a solution? You build your team. You bring the right people. Whether if you need technology people, you bring technology people. If you want to develop a website, which will e-commerce website, you get that the website developer, and you develop a prototype development.
While you do that, there was one aim that Mr. Salik Pawar mentioned. That was market survey. That is what you do, customer profiling and market sizing. Basically, you need to find out what is the market. Who is my market? Let's take an example of there's a difference between customer and consumer. You might have heard these two terms also. Consumer and customer. Now, customer is somebody who always pays for your solution or pays for your product. Listen very carefully. This is very important for those who really thinking in a business mind. Customer is somebody who pays for the solution. Consumer is somebody who consumes the product. A very good example of that is Cadbury chocolate, suppose. A young guy or a child wants a Cadbury chocolate. Is he a customer or is she a customer? No. They are consumers. But who is a customer? Their parent, their relative, their friend who is buying that chocolate for them is a customer. So when the entrepreneur, if I am an entrepreneur, when I am thinking that I need to build a different kind of a chocolate, what should I think? I should think that whether my consumer, who is my young child, young kid, will like the chocolate that I am building or I am changing. Also, whether the customer who is paying for my chocolate will be able to pay for it. Both the things are important. Not that I should make something which is liked by a child, but I also should make something which is easily affordable by the parent. So both things are there. So customer and consumer. So you actually do the customer profiling and consumer profiling to see who is going to purchase my product, who is going to buy my product. Is the product sellable? Is the product profitable for me? But is the product purchasable, buyable? Viability of the product. Prototype development, you develop the prototype, then you bring it to the market. You get a customer feedback, and then you start growing the business. Then you start marketing it, you start selling, sales marketing team, build a team, and you further grow it. And at some point in time, there's a possibility you may exit as a founder, or you will continue growing that business, or you may divert into the different businesses. While there was one more example, the previous Mr. Shalik Pawar mentioned was money. And lot of times startup entrepreneurs किंवा आपण म्हणतो जे उद्योजक आहेत ते म्हणतात की पैशाशिवाय काहीच होत नाही. Money is most important. But actually when there was a survey done across the world of number of startups and why they fail. And how many % of startups fail? Can anybody give me an example? Suppose there are 100 people who start their ideas, who think about ideas and start their businesses. How many are successful finally? What percentage are successful? Any clue, any idea? 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, 80%. How many? How much? 5% are successful. Sorry? 1% are successful and 99 are failures. Actually, the answer to that general average answer is about 10 to 12% startups are successful, whereas 90% startups fail. Why do they fail? But their idea is good, but why do they fail? There are a lot of reasons why the startups fail. One of the most important reason is you have an idea, you start working on that idea, but you don't think about the market. You don't think about whether who will buy my product, who will give me money for that product. Ultimately, entrepreneurship is a business. When you create a business, it's your own business, but somebody has to buy, somebody has to pay for it. And your customer, if you don't think about your market, and that's one of the most important reason, or one of the most
highest reason of failure, that you do not think about your market properly. Second reason is, yes, cash is important, money is important. You run out of cash. Building something, the same thing. No market means what? Building something that nobody wants. I have a passion. I want to do something. I want to develop something. But that is not required by the market. So what's the point? You will develop it. It will go in a trash can or it will go in some junkyard because nobody is using it. So that market is very important. Next. Yeah. So I was coming to why do we need Udyojakta or entrepreneurship in India today? It's very, very important today. As we said, our young age is 29. This is the advantage for India. 65% or mostly about maybe 70% of India's population is young. And that is going to remain for next 10 to 15 years or 20 years. So till 2035 and 2040, India has a great advantage to be a leader in the world. But if that advantage can go away, all young students and kids like you, okay, are the future of India. But if India cannot create employment for all of you, then this is a major disadvantage. And that's why the central government, the state governments have been working on developing initiatives which can help the young generation to be a job creator than the job seeker. To be an entrepreneur. So if 10% of you become startup entrepreneurs and create jobs than seeking a job. If you go for employment, while employment is important, but government India cannot give employment to everybody. And that is why entrepreneurship of Udyojakta is important. You can be a small entrepreneur. They call micro entrepreneurs. Or you can be also a large entrepreneur. Like you can be a Ola, Oyo Rooms, Airbnb, Zomato, Swiggy, some of these things. These are all business model changes. Or you can also create a small beautician shop or chai shop. There are so many new tea, these things have come up. These are micro entrepreneurs. The reason, the whole fundamental basis of these initiatives is be a job creator, don't be a job seeker only. So it's a great advantage, but it's a great disadvantage also. And that's why entrepreneurship is important. Self-employment is the best solution for this, for India for next 20 years. And we are happy that over last 10 to 15 years with the government initiatives, today in India, there are about close to more than 1 lakh startups that are currently working. More than 1 lakh in India. And there I will come up with some of the initiatives that government has taken and how we support as incubators these initiatives. We talked about your own boss. There is no age bar. As I said, I have entrepreneurs or the startup entrepreneurs which are as young as 8th standard students. We also have somebody as old as 45, 50 years. So there is no age bar for anybody. No gender discrimination. Today, in my incubator, which I was managing as a CEO for last 5 years, out of 100 startups that we were supporting, 20% of them were women entrepreneurs. So there is no age discrimination that only men can be the founders or men can start businesses. No. Today, even there are and actually government is pushing for women entrepreneurship. There are many incubators which are coming up, which are only supporting women entrepreneurship. Talked about government initiatives like Startup India, Make in India. Recently, last year, our Prime Minister announced Self-Reliant India, Atmanirbhar Bharat. Okay, so these are some of the things that actually a lot of times there's one more innovation that came up. This thing is import substitution. And Atmanirbhar Bharat, one of the focus was import substitution. There are a lot of products that we import in India from other countries like China, Taiwan, US,
Russia and all those things. Why can't, when India has such a huge manpower, India has such a skilled manpower, India has such a skilled youth manpower, why can't India develop those products within India? Why do we have to look at countries outside India to bring the products in India? That's where the self-reliant India came in. Atmanirbhar Bharat. And that's what, like, if today I'm importing, this is imported Garmin product. Why can't we build Garmin type products or Fitbit kind of products in India? What stops us? And that's is another thing that a lot of young students are thinking, that okay, I will think about a product or I will think about business that I can develop something which I am importing today, will develop in India. So there are a lot of schemes, like government has come up with schemes like e-sales. I think even Joshi Bedekar College also has an entrepreneurship development cell. All colleges, technology colleges, as well as arts and commerce. This is the arts and commerce college, but there are, every college today have ED cells or entrepreneurship cells. Their focus is how can we create awareness about entrepreneurship. What today we are having a talk is about creating that awareness of entrepreneurship. There are IICs. This is mostly for the technical institutes like engineering institutes, which is called Institute Innovation Councils. IICs, that is also from MHRD, AICT, that's sponsored. TBI, there are incubators. Government has sponsored technology business incubators from Department of Science and Technology at the central government level. Today in India, this is about 10 to 15 years back. Today in India, there are about close to 150 or 200 incubators. They are mostly attached to the engineering colleges. If you talk about Mumbai, Pune, in Mumbai itself, there may be 6, 7 or 8 TBIs. IIT Bombay has SIGN, Vijayati has a Vijayati TBI, Somaiya has a Riddle, Don Bosco has, I think, not Don Bosco, St. Xavier's has SIBA. There are, again, many incubators like that, TBIs. About 2 years back, or not 2, 4 years back, government came up with under Niti Aayog scheme, IICs, or this thing, AIMs, Atal Innovation Mission scheme. Under Atal Innovation Mission, there is a Atal Innovation Centers. I think Joshi Bedekar College is having a MOU with similarly AIC, Rambo Malki Proposition, AIC RMP. So that's the Atal Incubation Center. Ultimately support, what is the incubator? We'll come to that to the next. So these are the different government schemes that I talked about, DST schemes. I will not spend too much time on this. I think we can skip with the time constraints. Yeah, what is the incubator? So incubator basically is a institute or is a space where they support startups or entrepreneurs to build their ideas into business. So anybody who has an idea and comes to us, we try to understand that idea and we try to understand what support they require and how can we support that idea to convert into business. So we provide physical office space, we provide networking with the other industry players, mentoring, lab facilities, knowledge management, like IP. IP is intellectual property. In case your idea is patentable, you can file patents to us. Even government, Maharashtra State itself, there is a society called MSINS, Maharashtra State Innovation Society. They actually give, if you register your company in Maharashtra State and is a startup, you get 2 lakhs rupees as grant from Maharashtra State for supporting your patent filing. If it is an international patent, if it is a global patent, they give up to 10 lakhs. So there are different schemes under that. Entrepreneurship trainings. So we also have a trainings programs where we actually train how can you become an entrepreneur. I talked about multiple stages of startup, ideation, MVP creation, market, sales. And so how do you develop those? Third party services. Today, if you want to start a business, you need to go to create a company. Now you might think whether I should create a proprietary firm, whether I should create a private limited firm, whether I should create a limited liability partnership firm, which kind of company should I create? So that kind of support. Now you have created a company, but you need a compliances.
You need to file financial compliances every year. So we have a financial companies which can provide that support. Patent filing, website development, marketing companies. So we have a pool of incubator. Any incubator will have a pool of third-party service providers who will provide that support to your startups. Funding support. I'll talk about government funding support. Plus, there are funding support provided by the institute itself or private funding these things. Like I just heard principal madam saying that, or Archana madam saying that there is a seed funding available from the Joshi Bedekar College itself. It's a great thing. Seed funding may not be, don't expect it to be 50, 100, like a lakh to 1 crore. It will be 2 lakh, 5 lakh, but that 2 lakh, 5 lakh also is important for you to take your startup idea to the next stage. Interns for development. So these are some of the things that an incubator provides support to all the startups. Next, the entire ecosystem. So we talked about startups. So why should you come to an incubator? You go to any incubator I'm talking about. There are many incubators, as I said, in Mumbai itself. In Pune, where I used to operate as a CEO for that incubator for 5 years. It was in the College of Engineering Pune campus. I'll show you, I have a couple of slides on that. So this incubator actually connects you to the entire ecosystem. So basically government schemes, other accelerators, innovators, companies, because your product has to sold to the companies. It can be your business model can be a B2B, B2C, B2G, B2B, B2B, B2C. I don't know how many of you know this terminology. Okay, B2B is business to business. That means your product that you are building is sold to another business. It is not taken by you and me. B2C is business to consumer. A chocolate production by Cadbury, even the consumer is you and me. For their model is B2B because they don't sell it to you and me directly. Cadbury doesn't sell it to you. Who sells it to you is a retailer, a shopkeeper. There's a chain between, but for Cadbury, it's a B2B business. It can be B2G, B2 government, business to government. You can build a product which is sold to the government, government departments. So there are multiple businesses. So we have a corporate service providers. I talked about third-party service providers, mentors and advisors. There are startup mentors, technical mentors, business mentors. Like what I do is a business mentoring. So we actually handle the startup right from somebody comes to me, any one of you, sir, I have this idea. We will spend time, understand what is that idea, is it feasible, does it have a market, who could be customer, who could be consumer, why don't you go to that customer, do the survey, verify whether your product really, whether that problem what you're trying is really exists, verify your solution, whether that solution really fits the problem. Then start thinking of how will you build a product. So there are the entire journey we do mentoring. Incubators, there are funding agencies, investors. There's either government funding is there or actually investment is there. So you can do also investors. Yes. Next. Yeah, some of these fundings which are there that are required by during a startup journey. This is just a snapshot. I'll not get into the real details, but at the idea stage, there are different stages that a startup goes through, which are marked in yellow. Idea stage, proof of concept stage, prototype development, trials, commercial and production. Now the funding that is required could be in any range up to 5 lakhs, 5 to 20 lakhs, 50 lakhs, 1 crore, 10 crore, more than 10 crores. And who are the government schemes? Even below in the blue are the government schemes which support up to 50 lakhs to 2 crores. And some of these government schemes are given through incubators like us. So we give it to startups. Government gives the money to us and we give it to startups. Some of these schemes are already implemented by many of the incubators. If I can talk about this particular slide for 1 hour also, but we'll skip that with the time constraint. This is the incubator that I was managing for last 5 years, and I still is a advisor to this incubator. This is the incubator at College of Engineering Pune campus. It is called COEP's Bhau Institute of Innovation, Entrepreneurship and Leadership. This here is started in 2017. Over last 5 years, as of today, we must have supported about 200 plus startups in different technologies.
Next. So these are the founders of the incubator who had a meeting with our late president, Dr. Abdul Kalam, also a great scientist. And during that, the vision was said that how can we create an incubator which will support the young minds to create their businesses. And so we are supporting that. There are multiple things here. Bhau is the name, is the elder brother concept. Like elder brother supports the siblings. He doesn't do their work, but he supports them. He helps them to grow. Similarly, Bhau Institute is helping the startup entrepreneurs to progress from their idea to their businesses. We don't do the job. We only support, we are the facilitators. So there are different technologies that we focus on, and we incubate different types of incubation. I don't think I will get into these details. Next. These are some of the dashboards. Like as of March 2022, we had about 93 startups, which are active startups. Some of them who have graduated from us, they are already running their businesses, earning a revenue of more than crores of revenues on their own. Madam also talked about unicorns. Can somebody tell me what is unicorn? What is a unicorn? Sorry? You'll hear this term a lot of times, unicorn, unicorn. Even I think Archana madam spoke about in the saying that we will have some unicorns. What is a unicorn? A company having a valuation of more than 1 billion. Unicorn is a company having a valuation of more than 1 billion. In India, just to give a start, how India has progressed over the years. Since the start of entrepreneurship journey in India, okay, till 2021, till 2020, India had 45 unicorns. 45 unicorn companies, means their valuation is more than $1 billion. $1 billion is 7,000 crores. In today's value of 8,000 crores. So 42 companies were there. In 2021-22, during COVID, just imagine, during COVID, India has added another 45 unicorns in 1 year. And in 2022, in the first 3 months to 6 months, already 15 more unicorns are added. So this is the power of startups, and this is the power of youth. And 99% of these are youth startups who are developing this and who are creating the wealth for India and for all of us. I think that's the power of startup entrepreneurship. Next. These are some of the startups that we have supported by Bhau Institute. I will like to have some Q&A. In case any one of you have any questions, I will like to answer that. Yeah. हॅलो, एक ब्रँड आहे माझं समज, त्याचं माझं नाव रजिस्टर करायचं, तर किती रजिस्टर झाले? That is not a patent. That is not a patent. That is a copyright. That is the trademark. You are doing a trademark. See, there is a difference between trademark, copyright, and patent. There are three different things. Patent is something that your unique idea, you don't want anybody to steal it. So you file a patent. Patent can be a process patent or a product patent. Design patent. Okay, तुझं म्हणतो ते ट्रेडमार्क आहे. त्याच्यासाठी गव्हर्नमेंटच्या साईट्स आहेत, आपल्या स्टेट गव्हर्नमेंटच्या किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या साईट्सवर जाऊन तुम्हाला कळतं ट्रेडमार्क किती आहे. And when you go to a patent attorney, there are patent attorneys. Yeah, IP management company असतात ना, त्या patent attorney त्याच्याकडे गेलात ना, they can search whether similar trademark is available. It's called a search. ते search केलं की लगेच ते सांगतो तुम्हाला तिथे. So as sir was saying, like how many of you would like to actually become entrepreneurs? Really, great. So very few, but I think you all should think about creating. And once an entrepreneur is always an entrepreneur. Please remember, once you start doing something,
And also a lot of entrepreneurs who are successful entrepreneurs, if you go and talk to or listen to some of the YouTube videos of startup successful entrepreneurs, you will realize that they started with some idea and their final product is very different than what they started thinking. So there is something called the concept of pivoting. You pivot your ideas, you change your ideas so that it fits the business. It's called the product market fit. How your product is fitting to the market requirements. So you keep changing your solution, and that is really important. So, but the future is bright for all of you. Think about creating jobs than seeking a job. Be a job creator than job seeker. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Joshi Bedekar College. Thank you, Archana Madam, and giving me this opportunity to present. If any one of you really want to, I have given my email ID there. You can always write to me any email. We will be able to. I stay in Thane only. While I work out of Pune, but I stay in Thane. I can always help you out for any of the startup related any queries. I'll be able to help. Thank you. Thank you so much, sir. I would like to request Dr. Archana Prabhudesai to come on the dais. Indeed, it was one of the enlightening sessions for our students. Sir started up with the types of innovations that are taking place in the 21st century. Sir told us about the importance of idea and also about the typical startup journey. Sir also told us one of the important things, the reasons for a failure of a typical startup. Sir also cleared us the concept of the incubators. That is really a buzzword about in this time. Sir also shared with us about the funding landscape with all our students. I'm really sure after listening to both of the sessions, our students would like to be in the category of being a boss and not be in the category of saying yes, boss. So I'm sure our students will be in the category of employment givers and not in the employment seekers. So as it is said that all good things come to an end, to start a new fresh beginning. So here we come to the close of our program, end of our program, and I would like to call upon Dr. Archana Nair, coordinator of the conference, to propose vote of thanks. Thank you very much, Gianna ma'am. Before I present the official vote of thanks, a gentle reminder to all the students present over here, a QR code would be displayed on the screen regarding the feedback. आपको मोबाइल पे स्कैन करना है और आपका फीडबैक रजिस्टर करना है. Okay, so kindly take note of that. It is compulsory for all the students who have attended the workshop. Okay. Thank you once again. A very good afternoon to one and all present. It's indeed a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this eventful workshop. Let me graciously begin by thanking God Almighty for making this workshop a resounding success. I offer my sincere gratitude to our guest speakers, Shri Vijay Talele sir and Shri S.J. Pawar, for gracing the occasion despite their busy schedule and for enlightening our students with their ocean of knowledge. We are grateful to Vidya Prasarak Mandal and Dr. Vijay Bedekar, Chairman Vidya Prasarak Mandal, for his guidance and encouragement. I place on record gratitude to CA Sanjeev Pramesa, Garje Marathi for their cooperation and well wishes. I remember in gratitude our proud associates of the upcoming conference, Department of Innovation, Incubation and Linkages, University of Mumbai, Atal Incubation Center, Rambao Malgi Prabodhini, and Asian Institute of Family Managed Business for joining hands to conduct this conference fruitfully. My humble thanks to Madam Principal Dr. Suchitra Naik for always having our back and motivating us and pushing our boundaries and limitations. Thank you to the administrative team, Vice Principal Professor Shubhash Shinde, Dr. Priyamada Tokekar and Dr. Mahesh Patil, along with IQSC Coordinator Dr. Prajna Raje Bahadur and Coordinator Library Sciences and Librarian Mr. Narayan Barse.
I thank all coordinators, HODs, and faculty members of various departments for the moral support extended. Thank you to the entire committee of the pre-conference workshop, faculties and students under the leadership of convener Dr. Archana Prabhudesai, a token of appreciation for the hard work and dedication. I also extend my thanks to the supporting staff of Tarel Bajirao Peshwe Sabhagah. Last but not the least, a big thank you to all the student participants. This workshop was curated for you, and we are all really happy to see you taking benefit in maximum numbers. I hope you have gained a lot of benefit from today's sessions. Without your faith in us, the efforts would have no meaning. I would like to leave you all with a motto: upskill and empower. Thank you one and all once again. Before I request the technical committee to play the Pasaidan and close this workshop, a simple instruction to be followed. All the students kindly pay attention here. Student participants kindly pay attention here. I believe all of you have got the snacks coupon. You have to start exiting the auditorium from the last row. One by one row will be going out. You have to hand over the coupon to the volunteers over there, collect your food packets and leave silently with full discipline. I hope the instructions are pretty clear. Students, kindly pay attention. While exiting the auditorium, last row onwards, one by one row you will exit, and you have to hand over the coupons that you have to the volunteers, take your food packets and leave the auditorium. You cannot exit the auditorium before you fill the feedback. Once you give us a confirmation the feedback has been done, then you can exit the auditorium. I hope the instructions are clear. I now request the technical committee to render the Pasaidan. I request students to join in silence. We are extremely Yes, students, we are extremely sorry for the small technical glitch. I request Dipti Chindarkar madam to come on the dais and help us render the Pasaidan and give a holistic closing to this workshop. Students, kindly cooperate in silence and dedicate few minutes to the Holy God. आता विश्वात्मके देणे येणे वाक्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसायदान जे खळांची व्यंकटी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवा धर्मं सूर्ये पाहो जो देवांशी होतेला हो प्राणी वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांडिया
परत भूमंडळी भेटतु भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषाचे चंद्रने जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाती अनासक्तन होय रे हो किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होनी तिही मोठी जीवो आदि गुरुकी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टा दृष्ट विगहे हो आवेची हे तुम्हणी श्री विश्वेश्वरा वीणेवरी ज्ञान दियो सुखियो Students, I request you to cooperate with our volunteers. Discipline committee volunteers, kindly ensure that the students have given the feedback and row by row, please help them exit. And please do the needful and complete silence and discipline.